So guys, as I already mentioned that he's a ex-Special Forces Para Commando. So before I get into the detail, let's hear from Major Vivek himself. So Vivek, welcome to the show, Win Life Like a Warrior. Thank you, sir. Thank you, sir. Pleasure Vivek, to be here, sir. Yeah, it's nice for us also to have you on this show. Sir. Vivek, I know that your life has swung between the extremity like a pendulum, from the ferocious of fighting to the total peaceful life now where you are constructive. So Major Vivek, I believe your childhood, right from the beginning, you had one question, even as a child, means when you were in very young child, that who am I? Sir. And you are always looking for that answer from the universe, which is very pertinent question for everyone us to know. So please tell us that how you got that thought in such an early childhood. I really don't know, sir, how I got that thought, but very early on, let's say around, I think it was class 3 or 4, it was like an inner voice or an inner clarity, which was, always rising within me, and which questioned the world, where I used to naturally feel that the world is real, but it's unreal, but since nobody, these things are not taught in our education system, and even mostly our parents themselves don't know the answers to these basic things. And so we grow up in this kind of an illusionary reality, and without knowing who we are, why are we here, what are we doing, why are we doing what we are doing, what do we really want. So these are very basic questions, and I don't know how it is for others, but somehow, for some reason, very early on, these questions started coming in my mind, and I didn't have any answers, but the questions didn't go away. So I like know, that. I know. Sir, but this is Vivek, isn't very fantastic that people take whole life to know who they are. Okay, sir. And this question coming at the age of when you are in 3rd class or 4th class is really astonishing me. There is some divine things which brought this thing in your mind, and finally, what you are doing exactly towards that direction. So Vivek, what I made out from your details that you always wanted to travel the world, but you never had that kind of money because of your financial limitations in the early life. But then you, in that quest, you wanted to join the merchant navy, if I'm not wrong. But finally, you landed up joining the National Defense Academy. So how this entire episode happened? You may like to throw some light. Yes, sir. It's actually very simple. So I'm from an army family, and everything was great till a certain point of time in life, and then I was in class 5th and 6th. I was in class 5th, and for whatever reasons, my parents separated, so they decided to go their own way and things like that. And due to that, we kind of fell in a certain financial crisis. Yes. Very early on. By the time I cannot be dependent on my parents to educate me further, or to look after me, or to send me to college or anything like that. I knew that I cannot depend. Yeah. So I have to find my own feet. I was living clear about what responsibilities are going to come to me very, very early, and travel the world. That is what I personally wanted to experience. I want to see the world outside, and I knew that 12वीं के बाद तो I need to get cracking. I need to start earning money after class 12. So, but merchant navy I couldn't join because I had you needed a 6x6 eyesight to join as a deck cadet, and
as a marine engineer, you required to pay 5.5 lakhs as entry fees, which I did not have. So I was going for the decadent thing, but my eyesight was weak. I couldn't join. And the second option was for me was NDA. Even though I was from a military family and I loved the military way of life and all, but I had no, when you are young, you don't know all these things. कि सोल्जर बनना है या लड़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें बाद में जब बड़े हो जाते हैं तब ये सब चीजें घुसती हैं दिमाग में. I बट agree. छोटे होते हैं you live a simple life. Life is very simple when you are small. It's all about happiness and play and getting your meals on time. I know. And so but जैसी 12वीं आ गई कब तक वो घर से मांगना नहीं चाहिए, घर में है ही नहीं. तो NDA was a very good option. It's a great way of life, and I knew कि ठीक है, I'll not earn after class 12, but at least I'll not be a burden on my family, and I'll have a very, very good option for a very good career where I can stand on my own feet and live with respect and pride in our country. So that's why, sir. Yeah. No, that is true. That is true. And I think majority of us happen to land up in the army. This is one of the reasons why majority of us had come to that situation. Anyway, so how was the life in the NDA thereafter? Because though you were from the army background, but since you had the different kind of notion, okay, who am I think that must have hounded you throughout the NDA also. एनडीए में तो सर ज्यादा टाइम नहीं होता सर. एनडीए में तो मिनट टू मिनट चलता है सर, है ना सर. 2 मिनट की नींद ही मिल जाए, खाना मिल जाए, उतना ही बहुत है. हुआ हमारे तो गायब हो जाता है. So that's how it was. I did feel a little restricted early on in NDA because I don't know, by nature I'm a free kind of a person. I don't take to restrictions very easily unless they make sense. So blindly मैं कुछ नहीं करता sir. So I blindly trust and I blindly love, but otherwise I don't do blindly anything, sir. So तो बस NDA was good fun. I was physically quite all right, sir. I was doing well. So NDA there's a lot to do. If you're physically fit, then you're good in games and sports and all. So it's slightly easier on you. So I was okay that way, sir. So I didn't have much of a tough time as far as physical these things is concerned and all. And I was good in sports, so I used to get some respect also in the academy as a junior. Also, I had a decent time. And जहाँ मुझे अपना टाइम अपने लिए निकालना होता था सर, मैं निकाल लेता था. So I in NDA also academy also I lived relatively very free, sir. I believe you knocked out a very senior guy of your fourth term or fifth term during your bout of boxing. हाँ सर, I was before I joined Indian और उससे पहले मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो 5वीं क्लास से मैंने बॉक्सिंग वगैरह शुरू कर दी थी. So I was in touch with the sport and I knew how to box and play. So I had some very good opponents, sir, when I fought in NDA, and it was very interesting, sir. I had a good time, sir. जी sir. How was the life after that? After NDA, sir, NDA में 2 ही गेम होते हैं, boxing and cross country. So if you are good in boxing or good in cross country or good in both, so your life is much better, sir, comparative to other people. So I was good in that sport, sir, and I loved that sport. And nasha tha, sir, and I did well also. I was medalist, all of that in Scotland and all. So I got seniors gave a lot of respect, and I got a lot of love, sir. Got a lot of love, got a lot of freedom, got a lot of respect, and life was good, sir. So, what you are treated in your when you joined the NDA as a newcomer, when you become a senior after that in the 5th term or so, sir, how did you had a relationship with your juniors? How did you manage those kind of equations?
कुछ नहीं सर, मेरे को मैंने एक्चुअली ज्यादातर किसी को रगड़ा नहीं सर एनडीए में। एक दो बार कभी कुछ हुआ हो दाएं बाएं, तो अदरवाइज आई वाज I was in charge of the boxing team and things like that. जो मेरी टीम वगैरह होती थी, I used to look after them. I used to, enjoy my life in the squad and enjoy with my juniors. And I had a lot of friends. So, and I never really, and I didn't like troubling anybody for no rhyme or reason, sir. Right. और हाँ, तो ये था सर कि अगर कोई वजह है जिससे कोई फायदा होगा, तो फिर one may get interested. But otherwise, it was, I didn't have to, I didn't have to ragdo anybody to get the job done, sir. I know. और बोल देते थे तो हो जाता था, sir. That's it, sir. So as a senior also, I had a very good time, sir. A very good. I think I had a very good relationship with my juniors. Yeah. Like, अच्छा था. So you get to get time for yourself also. हाँ जी, sir. Yeah. Yes. That is very important. Otherwise, in the academies, it's very rare you get a time for yourself. That is true, sir. That is true, sir. Acha, Vivek, after that, you went for academy, IMA. How was the life there? Any incident which you would like to recall? IMA, sir, after NDA, IMA was actually मेला बोलते हैं सर वैसे तो. Indian Mila Academy. It's like ex-NDA say that, but I don't know what it is like now. उस time IMA में सर 3-3.5 साल आप एनडीए में रगड़ा खा के आ रहे हो, आपकी बॉडी ट्यून्ड है, माइंड ट्यून्ड है, आपको पता है एकेडमी कैसे चलती है, what are the loopholes, what is this, what is that, सब कुछ, and you're good in games and sports. तो फिर when you come to IMA, so for ex-NDAs, IMA is more of a little, cushier, I would say. Yeah. Because now you are postmates with people who are coming from colleges and things like that, and they have to, reach the general physical level. कई बहुत tough भी आते हैं सर, college वगैरह से आते हैं. They are very very tough. Sometimes they are tougher than ex-NDAs also. But that generally at large, people who are coming from after college to the academy, to their physical levels would be not so good because they are not lived a life like that. I know. They are not, their mind structure is not tuned to academy life. तो उनके लिए टाइम लगता है, तो they take time, and फिर XND बीच में थोड़ा मजा कर लेते हैं. So that's about it. तो ये आपने जो मजा वाली बात बोली ना विवेक, I reminded of one incident. Sir. ये firing range पे थे, तो जी sir. Again he was a NDA course mate only of ours. We were the technicals. So sir. this guy, he was smiling, and on the firing range, these kind of things are prohibited. So the ustad pointed him out, why are you smiling? But he kept on smiling. तो उसके ऊपर उसने एक साइकिल यहाँ लटका दी, left shoulder पे एक साइकिल, बोले just pick up cycle and keep it there. But he still didn't stop smiling. Then ustad ordered him कि दूसरी साइकिल लाओ, उसने यहाँ लटका दी. But he was still smiling. Matlab, he no effect on punishment. Then Ustad got cheesed off. He said, "You got another third cycle." He put another cycle on the top. With 3 cycles also, he was still smiling. And finally, that Ustad gave him up. So that is the kind of NDA people toughness. It's ultimately the toughness which they live with it, and how the life goes like that. So. You commissioned what in which this thing regiment? Sir, I was directly commissioned into that time Para Commando. हाँ जी sir. तो okay. And that to 9 Para. हाँ जी sir. I went directly to that time. It was 9 Para Commando. तो बाद में जाके Special Forces, the terminology got converted from Para Commando to SF. But when I joined, it was Para Commando only, and directly from IMA, I volunteered for Para Commando, and I had the privilege to go there, sir. So that selection took place in the academy, or you have to go to the unit only for selection? No, sir. It's like choice of arms hota hai. You apply for whichever unit that you, or whichever regiment that you feel you wish to join for, and it happens in academy only. And uske baad you are allotted basis a merit list, basis criteria. You are allotted your regiment, and I went. Selection happens once you join the unit for probation. Okay. वो तो just आपको एक vacancy मिलती है.
You have to Okay. go and prove yourself in the unit after that. Okay. Okay. So that means this option of opting for the para commando is there in the academy also. IMM. Yes, yes, sir. Definitely, sir. You can directly opt for para commando from the Indian military academies on commission. Okay. Even OTA also you can opt. Okay, but that must be based on the merit. Yes, sir. It's based on merit. You have to, depending on how many people are applying and where you are in merit, and matrix has, sir, iska ek. So Okay. that way. Okay. Yes, sir. So, Vivek, when you joined 9 Para SF, the one thing which I came to know is that the most difficult thing which you found, rather than fighting the anti-national elements or terrorists or militant, that was that writing or translating the English news in the Hindi news, sitting in the bunker or some hideout. You may like to share that incident. Means it's very means I was really very inspired by knowing this thing that soldier is fearful of doing this menial thing because he is supposed to do something which is supposed to do. So probation kya hai? So probation tests you, in three spaces. It tests your heart, or rather, if you want, test your spirit, and then test your mind and test your body, sir. So these three things are there. And body testing में क्या होता है, sir? You get used to things, है ना, sir? आपकी physically, if you are generally fit and all, then your body will adjust. And probation probation is conducted very, very scientifically, sir. ऐसा नहीं है कि पहले दिन आके बर्बाद कर देंगे, आपको बॉडी खराब कर देंगे and all that. ऐसा नहीं है. Probation is a very scientifically conducted, very, very meticulously conducted affair. And in fact, it is one of the most important processes of a special forces unit. है ना सर? एक तो आपके operations हो गए और आपका selection हो गया. In fact, if you ask me, a selection process for an SF battalion is the most important function of a SF unit. It is even more important than the operation itself. So Certainly. हाँ जी सर. तो so physically, psychologically, and spiritually you are tested, sir. And physically तो क्या होता है, after some time आपकी body ढल जाती है. So you can keep taking over extended periods of time, and थोड़ा spirit है तो चलता रहेगा सर, कहानी हंसते रहोगे, चलता रहेगा. Yeah. तो mind में क्या होता है सर? Mind is a fragile thing if it is not under control. So, or if it is not realized, an unrealized mind can have a very, very tough time. I agree. तो छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर वो दिमाग में बहुत बड़ी बन सकती है. So those kind of things. And so for me, everything else was fine, sir. Physicals वगैरह ये वो, but ये जहाँ लिखाई पढ़ाई का काम शुरू हो जाता था, तो वहां पे I used to get a little bogged down. करता था मैं सब कुछ. It is not that I've always been, somehow my parents brought me up in such a way where I learned how to express myself clearly. तो चाहे वो लिखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे पढ़ना हो. And my parents brought me up with exposure to a wide range of classics. And बहुत पढ़ा सर मैंने बचपन में. So in the sense, I read a lot of wonderful things from around the world. Yeah. So generally, I had idea of how to express, and everything was great. But I found these kind of tasks a little time consuming and very boring, sir. And this was during the training, Vivek, or in the normal course also? नहीं सर, सिर्फ नॉर्मल कोर्स में तो चलता है सर. नॉर्मल कोर्स में फिर काम की चीजें होती हैं, लाइक, बट इन ट्रेनिंग you are basically mentally broken down. तो you're physically broken down, you're mentally broken down. आपकी spirit test होती है. तो to break somebody down mentally, आप physically उसको बिल्कुल थका वका दो, और फिर उसको ऐसा काम दे दो जिसमें उसको दिमाग लगाना जरूरी है ना सर? तो तब वो जब वो दिमाग लगाना, when you are so tired physically, you are sleepy, you are hungry, and everything is going on, and on top of that you have to write book reviews, and you have to write so many things, and रात भर आपको जग के लिखना है, और कल सुबह आपको जो आपके साथ जवान आ रखे हैं प्रोबेशन करने के लिए,
उन लोग के साथ सवेरे compete करना है, वो कहानी है ऐसे. Like anything else in life, if you just keep doing it, it will happen, sir. Yeah. So, Vivek, you mentioned one thing physically, another thing you mentioned mentally, and there another very important thing is the spiritually. So, Sir. physically, mentally, we understood that this is what is done. Spiritually, how the training is done? How, what you are made to do to become spiritually enlightened? I will not say enlightened, sir. Enlightened होते तो मार काट छोड़ देते, sir. I agree. है ना, sir? So, but the thing is, so the thing is, the spirit has a very, very major role to play in any action force, sir. Absolutely. Especially in the military, in the armed forces, in the special forces. In fact, in every walk of life, it is like that. But यहाँ पे क्या है, sir? The spirit is everything, sir. It's like almost the entire game is on spirit only. Absolutely. If your spirit, आप जिंदा दिल हो, है ना, sir? आपको खुद पे you believe in yourself, you have sense of self belief, self reliance, है ना सर? ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो चीजें हो जाती हैं, रुकती नहीं है. ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल तो हर काम में आते हैं सर, है ना सर? बिल्कुल. तो पर स्पिरिट होगा तो you will be able to move through the obstacles and keep on relentlessly keep on doing, है ना, and keep heading towards your target. So in probation, the target is to clear probation, है ना सर? To complete all the tests, to get through the day, to get through the hour, to get through the months, है ना सर? तो और मेरे टाइम में जब मैंने प्रोबेशन ज्वाइन किया था तो प्रोबेशन 3 महीने से 6 महीना हो गया था सर, डबल हो गया था. हाँ सर. So that was one extra term I did in after clearing academy also. तो 6 महीने में प्रोबेशन में था सर. And so what happens is that the unit watches you. Everybody, you are like it. आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, but you are always under the scanner. Everyone is watching you. चाहे आप लंगर में, है ना, खाना खा रहे हो तो कुक देख रहा होगा कि आप कैसे हो. जवान आपको देख रहे होंगे. आप ट्रेनिंग एरिया में दूसरे लोग पीटी करते हुए जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वहां पे वो, है ना, लेफ्टिनेंट साहब क्या कर रहा है उधर प्रोबेशन में. लंगर का बहुत चलती है, आपस में बहुत बातचीत होती है, ऑफिसर्स को बहुत फीडबैक मिलता है, ऑफिसर्स कॉल एंड चेक, एंड सो देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन. तो व्हाट दे सी इज, जब रगड़ा पड़ रहा होता है सर, तो सब आदमी कट मारने के लिए देखते हैं, है ना सर? सब देखते हैं कि, है ना सर, जब समोसे और चाय आते हैं तो सब देखते हैं मुझे किसी तरह एक एक्स्ट्रा समोसा मिल जाए. वही तो टेस्ट होगा, वही तो इंटीग्रिटी का टेस्ट होता होगा. यस. तो बहुत सारी चीजें होती है ना सर? आप जब, जैसे मेरे साथ था, तो वन ऑफ द वीकेस्ट गाइज इन द प्रोबेशन एक जवान था सर. वो फिजिकली इतना टफ नहीं था, तो पर वो पिछला प्रोबेशन भी क्लियर नहीं हुआ था, वो फेल हो गया था पिछला प्रोबेशन. ही वाज नॉट सिलेक्टेड. आई विल से, आई विल नॉट कॉल इट पास और फेल, आई विल जस्ट से ही वाज नॉट सिलेक्टेड, ही वाज नॉट फाउंड सूटेबल फॉर पैरा कमांडो. तो दे वर सेंडिंग हिम बैक. तो फिर उसने काफी सर जाके सर मेजर साहब से और बाकी ऑफिसर से जाके बहुत रिक्वेस्ट की सर. उसने बहुत मन लगा कि उसने बहुत बहुत विनती की. तो उसको another chance. He joined the probation that I was in, and उसको like he was made my buddy sir. Okay. तो मेरा खुद का तो अपने प्रॉब्लम चल ही रहे थे. like probation is tough for everyone sir. I know. तो मेरी खुद की प्रॉब्लम चल रही थी, and all of that, and then one of a person who is physically weak has been allotted as your buddy, so you have to make sure now that he is also doing well. Absolutely. तो वो वाली चीजें सर देखते हैं क्या, तो हम करते थे, सुबह सुबह पीटी साथ में करते थे, सब कुछ साथ में करते थे. तो जब भी उसका थोड़ा सा दिल Vivek, can you hear me?
हाथ पकड़। विवेक थोड़ा सा बीच में कट हुआ तुम्हारा वॉइस जो है। जी सर, कोई बात नहीं। So spiritually sir, actually probation initially, yes, probation is about two things. It is about selection, but it is also about training, है ना सर? तो ऐसे बटालियन में टाइम कम होता है ना, we don't like to waste time sir. तो बंदा probation में भी चल रहा होता है, but he is getting trained also. So even a person who does not get selected or is not found suitable in probation, when he goes back to his unit, he has learned so many things already in probation that he is an asset to any unit he goes to. Absolutely. He'll do very well there sir. हाँ sir. एंड बंदे में कुछ ना कुछ दम तो होगा ही सर। जो बंदा एक स्पेशल फोर्सेस का वॉलंटियर फॉर्म भरता है और उसको पता है कि यहाँ जाके मेरा भूत बनाने वाले हैं, एंड फिर भी दिल से भरता है, and he knows the kind of dangers and the kind of high intensity life he is going to go into, and that there is no tomorrow, you are always living in a now. तो बंदे में कुछ ना कुछ दम तो होता ही है। तो जब वो बंदा आता है ये सारी he goes through a selection, and spiritually is something that nobody can really teach you ना sir. It is all about self realization and understanding, है ना sir? Absolutely. तो वो देखा जाता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो अपने साथियों के साथ, अपने जवानों के साथ, है ना? कैसे इंटरेक्ट करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कैसे आप हेल्प करते हो, कहाँ जहाँ लीडरशिप की जरूरत है, क्या आप में वो लीडरशिप लेने की ताकत है कि आप the kind of moral spirit that is required to be able to take leadership in tough situations and things like that. तो ये सारी चीजें वो रगड़े में लगते लगते वो ट्रेनिंग ऐसा डिजाइन हुआ होता है और टास्क ऐसे मिलते हैं कि ये सारी चीजें निकल ही आती हैं सर बाहर। In fact, Vivek, what you mentioned is, it's all being healthy. So health is not only physical, because you said physical is there, mental is there, then social is there. What you spoke about, the relationship among each other, and then spiritual. And spiritual, you already said what is your self-image, self-belief, self-confidence, and self-esteem, and finally, how courageous you are. So it's an entire process which is very scientifically designed to make you what you are, real para commando or the special force. Wonderful. So Vivek, you served there for 14 years. It's a long time. Means one can imagine that how much you must have danced between the life and the death, and number of times you must have come across such a scenario. But one fine day, you all of a sudden decided that, no, now let me find the purpose of life and the reality of the world. What was that thought? I just wanted the thought of how it came. What was the thought? Because everything starts from the thought. Then comes the feeling. Then comes your emotion. And then you take some decision. And then you take action. And finally, the Kalchakra starts. So that one particular thought, by which you took such a decision after just 14 years, just short of your pensionable service, how much? 6 years? Yes, sir, at 6 years more for a pension. Yes. So the thing is, sir, so this dance of life and death, sir, basically it is life and death which is dancing. मैं तो सीधा ही चल रहा था. Pendulum. मैं तो सीधा ही चल रहा था सर. जिंदगी life and death खेल रही थी. So when you don't know, it seems that when you are not aware, then it seems that life is doing everything. Once you become aware, then you realize you are the one who is doing everything, है ना सर? तो वो है सर, सब कुछ अंदर से ही बाहर आ रहा है. अब आप वो, so it's how you perceive it. So any case, sir, it's as you go through life, sir. As I went through life, as I went, after academy, then probation, joining 9 para. After that, serving for what? Almost what? Yeah, sir, almost 9 years I was there. Then from there I went to another special forces unit. From there I went to 11 para SF. So I served in 11 para SF also. But by the time I reached 11 para SF, basically sir, क्या हुआ कि दुनिया देखी सर मैंने, है ना सर?
I saw the world outside. I saw the whole world. I did a lot of research into alternate history. I've always been an explorer of knowledge and explorer of understanding. है ना सर? कई बार मतलब often life is like this कि आपको पता नहीं, आपको जाके मान लें अगर ये सोचे कि जिंदगी एक पिक्चर है ना सर, तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को पता नहीं किसने थिएटर में बिठा दिया है, पैसे तो मेरे ही लग रहे हैं, पिक्चर भी मैंने चूज नहीं की है, कुछ भी है चल रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है ना सर? यू हैव नो चॉइस, है ना सर? बट 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 आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, है ना सर, कुछ एक्सपीरियंसेस होती हैं, एक तो अंदर की एक चाह होती है समझने की, जानने की कि मैं कौन हूं। There are so many people I love in this world. Everyone is a human being. Everybody has got, living the same highs and lows that we are living. And बहुत सारी बेसिक चीजें मुझे समझ नहीं आई सर दुनिया को देख के। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि that इतनी मतलब just if you just look at the world today, it is so like beautiful. A mad place. Yeah. It is a mad place, sir, mad place. Nature is beautiful. The human beings, what they are doing on this planet is not beautiful, sir. Yeah, that is bad. That is mad. That is maddening. Yeah. Yes, sir. It's maddening. है ना sir? People don't know who they are. They don't know why they are born. They don't. इतनी छोटी सी जिंदगी यहाँ जीने वाले हैं. Correct. वो भी नहीं पता कि अगले क्षण जिएंगे या नहीं जिएंगे. पता नहीं कैसे मरेंगे कि नहीं मरेंगे. Absolutely. और इतनी प्रेशियस चीज जो इसके आगे ना पीछे आपको कुछ पता नहीं है. आपको ये नहीं पता कि आप पिछले जन्म में क्या थे. आपको ये नहीं पता कि अगला जन्म आपका होगा या नहीं होगा. जो भी है आपके पास इसी जन्म में है और इस जन्म में इसी वक्त है ना सर? Yes, yes. So at some point of time, when you grow up a little in life and you mature a little and you understand life a little bit more closely, you ask the right questions, you start seeing beyond your own fears and insecurities. When you rightly said, when you ask the right question from the universe, you get the right answer from the universe. हाँ जी सर. तो ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें थी सर. एंड व्हाट हैपेंस इज कि why people are unable to ask these questions is because सब लोग मौत से बहुत दूर भागते हैं सर, है ना सर? एक ultimately it is the fear of death from which all other fears arise, है ना सर? Absolute. हाँ, तो क्या होता है, हम हमारे पास ये जवाब है नहीं कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं. हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम पैदा क्यों है. हमारे पास ये जवाब नहीं है कि हम मरेंगे क्यों. हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है ना सर? एंड स्पेशली मौत को लेके हम पैदा हो गए, ये तो चलो मान लिए कि अभी हम जिंदा हैं, है ना सर? पर मर जाएंगे और कभी भी मर सकते हैं. मरने के बाद क्या होगा? जिन लोगों से मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, ये वो जो भी है जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ और रिलेशनशिप है, उनका क्या होगा, है ना सर? ये सारी चीजें हमारे पास जवाब है नहीं, इसलिए हम पूछते नहीं है. पर एक्चुअली जिंदगी जीने का असली रस उसी को मिलता है. जिंदगी जीने का असली रस उसी को मिल सकता है जिसने मौत को समझ लिया हो, नजदीक से देखा हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया हो सर. सिंपल सी ट्रूथ है ना सर? मरना सभी को है. आज तक किसी ने ये रूल तोड़ा नहीं है ना सर? नोबडी हैज ब्रोकन द चक्रा ऑफ लाइफ एंड डेथ एज ऑफ नाउ, है ना सर? अमंगस्ट अस कॉमन ह्यूमन बीइंग्स, है ना सर? Yes. So and since death is inevitable, then and death is very final, and there is nothing that you can see beyond death, then life becomes more precious, है ना sir? Absolute. At the very nature that death can come to you at any moment, the next day, the next month, any time it can happen to you anytime. But how do we live our life? We live our life basis comparing ourselves to other people, who has got more, who has got less, who is better, who is worse, who is this, who is that, how should I become like that person, etc. etc. बहुत सारा भ्रम और माया में जीते हैं सर दुनिया. Actually हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि they are making you workers. Laborers. In any which way, people are मतलब आप काम करना, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पर बेवकूफ की तरह काम करना और मेहनत करना एक्चुअली विल बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, है ना? एक्चुअली हमारी एजुकेशन में लीडर्स बनाने का रोल ही नहीं है. लीडर तो बनाते ही नहीं है सर. लीडर तो तब आदमी बनेगा जब उसको खुद की समझ होगी ना सर.
Correct. जब आदमी खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्यों पैदा हो रखा हूं, मेरा काम क्या है इधर, दुनिया क्यों बनी है, क्या होता है यहाँ पे, किस लिए है ऐसा, जब ये बेसिक बेसिक फाउंडेशनल क्वेश्चंस ही आदमी को नहीं पता है, तो वो क्या लीड करेगा, किसको कहाँ लीड करेगा। वो Correct. एक्टिंग तो Correct. कर लेगा कि वो लीडर है ना सर, थोड़े मसल बना लेगा, थोड़ा लीडर बन जाएगा, जोर से बात करेगा, है ना, कोई बहुत सारे रैंक हो गए तो रैंक फेंक देगा, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा तो पॉलिटिशियन कोई बोल देगा, कोई भी पावरफुल मैन विल एक्सप्रेस दिस थिंग। बट But when it really comes down to leading, where is leading actually required? Leading is required when the chips are down. जब बिल्कुल सब कुछ टूट फूट गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, तब जो आदमी खड़ा होके दूसरों को दिशा दे सकता है, खुद को दिशा दे सकता है और दूसरों को दिशा दे सकता है, वो है लीडरशिप, है ना सर। और इस टाइप का आदमी जो दूसरों को दिशा दे सकता है, उसको खुद का ही नहीं पता तो वो दूसरों को कैसे दिशा देगा। बट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं सिखाते कि आप कौन हो। एंड मैं विदेशियों का सोच सकता हूँ कि ठीक है कि अमेरिकन को नहीं पता होगा, उनके एजुकेशन सिस्टम में है ना स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, या फलाना दूसरे किसी देश में क्या बोलते हैं एजुकेशन से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन सर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, है ना सर। तो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, very very logical science. Spirituality is entirely different than the religion, nothing to do with the religion. Spirituality is a truth sir, it's a basic truth of our existence, है ना सर। Absolutely. तो and the unfortunate thing is कि हमारा देश है ना सर, हमारा geographical area, हमारा देश जहां पे the world's greatest, deepest, most liberating truth of Aham Brahmasmi, of Advait Vedanta, all the Vedas, everything has originated from our country. And we have set all of that aside and we have taken a foreign education system and we are teaching that to our people. So our people also, most people don't know who they are. है ना सर? Yes. इनफैक्ट अगर आप कभी गांव वगैरह में जाओगे, जैसे मैं अभी पहाड़ों में आ रखा हूँ सर, है ना सर, शहर से बाहर है, पहाड़ों में आ रखा हूँ, यहाँ पे मैं गांव वगैरह में जाता हूँ, मैं लोगों की लाइफ देखता हूँ, लोगों की बातचीत देखता हूँ, लोग आप किस चीज, उनकी रहन सहन, उनकी इंटरेक्शन कैसे करते हैं, वो दे आर सो सिंपल सर, they are so simple, so honest, so truthful, so to the face. There is no drama, there is no acting, there is no pretense कि मैं आपसे क्या ले लूंगा, आप मुझसे क्या ले लोगे, है ना सर। Bottom line is they are more spiritual. Yes sir. तो because है ना सर, because पुराने जो गांव वगैरह में जहाँ पे ये मेजर इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम पहुंचा नहीं है, वहाँ पुराने रीतियों, पुराने भू बोली, है ना सर, विजडम पासिंग थ्रू द एजेस is being followed, है ना सर। They are eating fresh food, they are eating natural things, they are living, drinking fresh water, breathing fresh air, and they are not running after anything, है ना sir. They are living a very simpler life, and you will find that the quality of their life, the quality of their health, and quality of their thoughts, quality of their being is far superior than most people living in the cities. I fully agree with you. I fully agree. Sir. Yeah. So the point is this, sir, that what I felt, what in my limited understanding, sir, I don't claim to be some great this or that, but yes, I have spent 43 years on this planet, and I have had a variety of experiences that many people are not fortunate to have, sir. I have been very fortunate to see deaths closely so many times I have seen it कि वो छप गया है सर दिमाग में कि मौत का मतलब क्या होता है ना सर। जब मौत का मतलब पता लगेगा तो जिंदगी का मतलब पता लगेगा ना सर। इट्स लाइक इन दी मिरर, है ना, डेथ इज लाइक अ मिरर इन विच यू कैन सी योर लाइफ सर, है ना सर, मीनिंग ऑफ योर लाइफ। तो सिंपल सी थिंग सर, जस्ट that our education system, if it would include the spirituality, our ancient wisdom, which is all written in our and easily accessible, sir, if it is brought into our mainstream education, not only in the schools but also at home, where parents also come to know कि भाई कि क्या है. So once that becomes the foundation of your thoughts, of your feelings, of your everything, and sir, there will be only creation, there will be harmony, people will live much higher levels of life, and the social structure of our society will be far more strong and capable of evolving much faster, sir, है ना सर। अभी तो है ना, it is थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, आवाज ज्यादा है और एक्शन कम है सर। So that means
when you got this thought, when you realized really the importance of the knife, that is when you decided कि भाई अभी बहुत हो गया, let me quit and move out. Sir, Because that was my question. my due, I understand what is the value of the ability to destroy. What is the value to be able, the ability to protect? है ना, sir? Our job as what is the thing about Indian Armed Forces and Indian Special Forces? We are not an aggressive force कि दूसरे देश पे जाके हम आतंक फैला रहे हैं, दूसरे देश पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, दूसरे देशों को जाके ओवरटेक कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं, है ना सर? We are not like that. We protect our nation. We protect the boundaries of our nation so that all the economic activities, social activities, culture, traditions, etc., all that is the hallmark and strength of our nation is protected. Yes. है ना sir? Yes. So that people can, go and do work, they can earn their livelihood, they can live have a family life, their children can go safely to school and live a normal life, है ना sir, on earth, within this nation. So as a special forces, as armed forces, our job is to protect this nation and all the ongoing things that go on in this nation, right from the politics of this nation, right down to sir, a villager working in his field in some far off village, sir, है ना sir? So अगर that is हम हट true. गए अगर हम बॉर्डर से हट गए तो फिर तो कुछ और ही हो जाएगा सर यहाँ पे, है ना? Vivek, you rightly said we are never aggressive. We have never tried to overpower or expand ourselves to anybody's threat territory. So there is no doubt in it. But what I'm saying is, when you decided that, as I know that when you have not completed 20 years, it's very difficult for the army to leave a person like anybody for that matter, any commissioned officer. So how easy or difficult it has been for you? Because I know that one fine day you just went to your commanding officer and you said, sir, let me move on. It came as a culmination, sir. Actually, I had finished commanding my team, and my team had reached a stage where I felt that it did not need me anymore. They had become to that level of efficiency they had reached where I felt they don't need an officer also anymore. They can operate on their own. Sir. So that was when my own team that I was leading in combat had reached a level of efficiency where they didn't really need me anymore. वो खुद ही कर सकते थे, वो इस level पे पहुंच गए थे. And second thing was that after so many years, almost a decade, sir, of combat, it just stopped making sense. It just stopped making sense to me to kill anyone, sir. That's all. To destroy anything, to kill anyone, to do these things. ये लकीरें किसने काटी हैं सर? इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, ये लकीरें किसने काटी हैं? भगवान ने थोड़ी ना काटी हैं। हमने किया। हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे इंसानों ने काटी हैं। Nature has done nothing. इंसान ने लकीरें काट ली हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना सर? So that is the spiritual perspective to things, the true reality, है ना sir? Yes. All of this chaos that is happening in the world, our world, है ना sir, has been created by us only. Absolutely. है ना sir? Absolutely. But the reality is that this chaos exists, है ना sir? Yes. And the reality is, अगर है ना sir, for anything to exist, its exact opposite has to be existing. For good to exist, evil has also got to be there, है ना sir? It's a relative thing. है ना सर? तो इट इज अ प्ले सर, ये सब लीला है ना सर? ये दुनिया एक लीला है, यहाँ पे लीला चल रही है सर. And life itself is a duality. Yes, without duality there is no life, sir. Yin or yang, there has to exist. Whether the black and white, the sun or moon, or the dark or light, or feminine or male, it has to happen. It has to, and every person has got some white to some black is always there. Yes, sir. Yes, sir. The idea is not to become perfect, sir. The idea is to be yourself. है ना sir? That's the idea. So क्या बोलते हैं? Nature has only made you. Nature has made everything else also. Whichever way that human beings are playing themselves out today is been designed by nature. For the world needs duality to exist. But nevertheless, sir, I reached a point where I had, in my understanding of what it means to be a destroyer, I had reached my peak, sir. मेरे को पता था इसके आगे कुछ नहीं, यही है. That was one. And when having reached that peak, it's like people when sports people, है ना sir, like let's say Mahendra Singh Dhoni or somebody, they have reached that peak and then they leave, है ना sir? Yes. So है ना sir? So that is one.
And the second thing that came to me was that if I don't believe in destruction anymore, I have no business to lift a weapons. है ना Oh, सर? okay. हाँ सर. Yeah. जब मेरे को डिस्ट्रक्शन में ही बिलीफ खत्म हो गया, इंडिविजुअली बिलीफ, आई अंडरस्टैंड व्हाई डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी हैज टू बी देयर. If Yeah. people like me are not there, if people like in protecting our nation are not there, this nation will fall. है ना सर? Yes. Simple as that, sir. अगर Absolutely. हमारे जैसे लोग वहां अपने काम में इतने माहिर नहीं होंगे और इतना स्पिरिट नहीं रखेंगे, इतना सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, तो घुस जाएंगे लोग सर अंदर, हमारे घरों में घुस जाएंगे. I know. मैं They तो will बोलता chase था up to सर, Delhi. they will reach your home, sir, and they'll ring your doorbell. So that is Vivek, sir. when you declared this thing, how was Sir. the reaction of the organization? Please, we just like to know. How was the reaction? Nothing, sir. Special forces mein people are very mature, sir. They have seen a lot of life. My commanding officers always have been more or less very mature, sir. And especially the person whom I when I decided to leave, I went and told him simply कि sir बस, है ना sir, मेरी injuries इतनी हो गई थी, बहुत सारी चीजें थी, and I myself realized that now that I have started doubting destruction itself, है ना sir, then I should not go into combat, है ना sir. Then I will put other people's life at risk, because ऐसा है sir. If you अगर आपके belief में थोड़ा सा भी अगर चिंक है, थोड़ा सा भी कमजोरी है आपके खुद के belief में about what you are doing, why you are doing it, then you will pay with your life, sir. You will pay with someone else's life. Your buddy's life will go. You will not succeed if you don't have a self belief. You will not succeed. So I realized, sir, कि एक तो I have reached my peak, and I was after that I was going to become a lieutenant colonel, sir, and then sir, going into administrative duties and things like that. So, and my dream of commanding a team, everything was done. Plus, I had realized that I have played the game of destruction, and it does not hold meaning to me anymore. For me to personally dedicate my life like that. How did your commanding officer reacted then once you confessed? कुछ नहीं सर, हम कहीं बाहर निकल रहे थे, कोई ऑपरेशन की रेकी वेकी करने जा रहा था सर. वो अपने जंगल बूट पहन रहे थे. मैंने उनको बोला सर कि बस हो गया सर, एंड ऑफ द रोड. तो उनको he himself, he had seen far more combat than me also, sir. Great soldier, sir. Great soldier. उनको गोलियां लगी हुई थी, वो this that. One of the most respected people I have met in my life, sir. तो वो थे सर, उन्होंने देखते ही समझ गए कि क्या हुआ है. उन्होंने जाके फ्रिज खोला, 2 बियर बॉटल निकाली और बैठ के बियर खोली सर, और बस सर एक बियर पिया, और he just said कि okay, whatever you need from me, I'll help you. बस that's it. मैंने बोला सर कि मेरे को, एंड मेरा ये था सर कि अगर लोग पूछते हैं कि पेंशन है ना, कि 6 साल और कर लेता तो पेंशन मिल जाता. देखो सर, पहली बात तो जब मैं फौज में था तो मैंने कभी अपनी सैलरी नहीं गिनी सर. 14 साल मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी सैलरी कितनी आ रही है, कितनी बनती है, कितनी आनी चाहिए, कितनी नहीं आ रही है, सीडीए कितनी काट रही है और कितना नहीं काट रही है. मेरे को कुछ नहीं पता था सर. मेरे घर में इतना राशन होता था कि कोई भी मेरे घर में 50 लोग भी आ जाते थे तो खाना होता था, है ना सर. और क्या बोलते हैं, मतलब कभी बेसिक चीजों की कभी कमी पड़ी ही नहीं सर. मतलब कभी सोचना ही नहीं पड़ा, है ना सर. तो बस ऑपरेशन चलता था और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. आई यूज्ड टू थिंक नथिंग एल्स. आई यूज्ड टू ईट स्लीप ड्रीम ऑपरेशंस ओनली सर, नथिंग एल्स. हाँ सर. तो फिर जब वो खत्म हुआ तो बिल्कुल ही खत्म हुआ सर. एंड फिर मेरा ये था सर कि अगर मारना नहीं तो और हथियार नहीं उठाना तो फिर फौज की तनख्वाह कैसे ले लूं सर, है ना सर. So this happened for how many months? ये सर जब मैं कॉम्बैट से वापस आया था, एक पूरा ऑपरेशनल टेन्योर करके वापस नीचे घर पहुंचा था, तो 6 महीने बैठा सर मैं. 6 months I thought, sir, I had to think a lot. I realized that I don't want to kill anymore. I realized that I don't want to pick up a weapon anymore. I realized that I realized a lot of things, sir. मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बहुत भ्रम में दुनिया चल रही है सर, बहुत ही भ्रम में, है ना सर. और हमने खुद के ही दुख पैदा कर रखे हैं. I mean, just imagine, just look at the world, sir. है ना सर. Human beings are so capable, मतलब भगवान के बाद इंसान ही तो है सर, और कौन है? Absolutely. And that too, Vivek, I must add one thing. भगवान के बाद इंसान है, और इंसान के साथ भगवान हमेशा है.
एक्चुअली सर ये इंसान और भगवान के बीच बीच का जो डिफरेंस बना रखा है ना सर, वही तो है प्रॉब्लम सर, है ना सर? प्रॉब्लम, हाँ बिकॉज इंसान भगवान के साथ मिलकर सब कुछ कर सकता है। सर भगवान ने दुनिया बनाई और इंसान भी भगवान ने ही बनाया, हम भी भगवान के ही शेष हैं सर, वी आर पार्ट ऑफ गॉड ओनली, है ना सर? आई एग्री विद यू, आई एग्री बाय एनी स्टैंडर्ड यू वांट टू गो इनटू एंशिएंट विजडम एंड रीड दैट, तो लिखा हुआ है, हम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है यस ना सर? यस, मैं ब्रह्मा हूँ, तो यस। जिसके जिसके बेसिस पे पूरा हमारा बिलीफ सिस्टम चल रहा है, जितने भयंकर रिलीजन्स आर देयर इन प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज द सोर्स ऑफ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दैट सेइंग? इट इज सेइंग यू आर ओनली, यू आर इट, है ना सर? आप ही हो, भगवान भी आप ही हो, सब कुछ आप ही के अंदर ही है ना सर? एंड दैट इज द केस फॉर एवरीवन। Vivek, 6 months you remain before your paper got approved. 6 months you remain in the unit without going into any combat, isn't it? हाँ सर, I was back. I had finished my operational combat tenure. I came back and 6 महीने का मतलब यूनिट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होते हैं, टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होते हैं, लाइफ एज यूजुअल चल रहा था एंड आई हैड टाइम टू थिंक, सो आई हैड टाइम टू अंडरस्टैंड। मेरे को समझ में तो आ गया था कि यू नो not another step more, and that in fact if I do this anymore I will destroy someone else, मैं किसी और मेरे किसी टीममेट का नुकसान हो जाएगा, है ना सर? तो it was time to leave and I sat and thought. हाँ and the salary of this 6 months you dedicated to your jawans. मैंने सर यूनिट में ऑफर कर दिया था, है ना सर? मैं बोला कि अब मैं तो जा रहा हूँ, है ना सर? और ये स्पेशल फोर्सेस यूनिट है एंड इनफैक्ट आई गेव इट इन राइटिंग टू माय कमांडिंग ऑफिसर आल्सो, है ना सर? मैंने अपने जन्मदिन के दिन मैंने अपना इस्तीफा लिखा सर, और उस इस्तीफे में मैंने लिखा कि सिंस आई डोंट वांट टू kill anymore and I don't want to destroy anymore and I am not in a position to do it anymore, I don't deserve this salary and this is a special forces unit and नई नई खड़ी हुई है सर, और यहाँ पे मौत तो होगी, है ना सर? हमारे भी जाएंगे, ये लड़ाई तो चलती रहेगी, है ना सर? तो हमारे भी जवान मरेंगे आगे चल के, उनके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, है ना सर? है ना सर? मार्टियर फंड होना चाहिए यूनिट में। तो I offered my salary to the commanding officer to set up a martyr fund in the unit so that future casualties they have at least start off, है ना सर? Some fund can be started so that future casualties their wives and children can be looked after. That's all. Very noble gesture, very noble gesture. You need a lot of big heart for doing such thing, because you yourself had your family, you had a child, and you are coming without pension, leaving the armed forces without pension, means a lot of courage, and you have seen the life, so there was no issue in that. Vivek, it is very practical, sir. It is actually very practical decision. All my decisions which I take in life are very, very practical. They seem to other people, है ना sir? But all the decisions, I have survived all these combat situations. I have been in sound. You're mute. You are muted. Sir. Can you hear me now, sir? Yeah, now it's okay. With all the experiences that I was fortunate enough to see in my life, sir, and especially in my Special Forces unit in 9 Para SF and 11 Para SF, the life that I saw, the people that I met, the operations that I did, all the experience that I had, sir, all of this opened up. मतलब sir, every time you are leaving your room, every time you are going out for your job, जैसे लोग है ना शहरों में, जैसे लोग कोई शहरों में घर से तैयार व्यार होके ऑफिस जाते हैं, है ना सर? कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई है ना, कोई पॉलिटिशियन है, कोई है ना, कोई जो भी है। गांव में लोग घर में तैयार होके तो में जाते हैं काम करने के लिए, है ना सर? तो हमारे केस में सर हम तैयार होके ऑपरेशन में जाते थे लड़ने के लिए सर, मरने के लिए या मारने के लिए, है ना सर? तो every time you go out to do your job, there is a 50% chance you will not come back alive. 50%, sir. हाँ सर. It's always either you come back or you don't come back. So 50%. अगला आदमी, हाँ सर, अगला आदमी भी बेवकूफ नहीं है ना सर, जिसको आप जिसके साथ आप लड़ाई करने जा रहे हो, वो उसके पास भी हथियार है, वो भी ट्रेंड है, वो भी घूम रहा है उधर, है ना सर? वो भी आपके, अगर आप अपने आप को अपने दुश्मन से ज्यादा तगड़ा समझने लग जाओगे, बहुत जल्दी गोली लग जाएगी, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये है सर। तो सो लाइक दैट सर। तो जब इतना करने के बाद मैंने बस ये सोचा, of course I value money, I value money, I have value for it, I don't disrespect it, I understand कि how money, आज मैं गाड़ी में बैठा हूँ सर, इस गाड़ी में तेल भरने के लिए पैसे लगते हैं, Absolutely. but the thing is, but money cannot be the defining factor
to Of choose life. your profession of life, sir. है ना sir? Yes. Money is Yes. a byproduct. You create Yes. value. Whatever you do in life, if it has value, it will create enough money for you to keep doing what is valuable to you. है ना sir? I must say But that लोग, money is basically the spiritual. Money is to exchange the value. The more the value exactly, you give, money will follow. it is a form of energy, sir. Money is a Absolute. form of energy, just like Yes. everything else. It has Absolute. got its, हाँ sir. So, but people have made money their core focus, है ना sir? Like I met a Yeah. person, sir. He said कि he was asking me some advice. ऐसी पूछ रहा था कि भैया मुझे मेरे को ये वो प्रॉब्लम है, ये है, मेरे को पैसे कमाने हैं. तो मैं बोला यार अच्छा तेरा एम क्या है लाइफ में? बोल साहब भैया पैसे कमाने हैं. तो मैंने कितने पैसे? बहुत सारे पैसे. तो अच्छा बहुत सारे पैसे कितने होते हैं? भैया पता नहीं, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे. मैंने अच्छा 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, $1 billion, $100 billion, हाउ मच यू विल से इज योर टारगेट, जहां पे आपको आप बोलोगे कि हाँ मैंने कमा लिया. खुद ही तो नहीं उसका पता है. जवाब, दैट इज द सेम केस विद मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड सर. नहीं पता नहीं, लोगों को. और ये तो नहीं, एक तो ये क्वेश्चन है. दूसरा, यदि आप उससे ये पूछ रहे हैं उसको करोगे क्या, then he will have no nothing. He will not be able to spend even 2 crore. Actually, the thing is, sir, that the world today, or our consciousness, or our collective mind, our individual mind operates in the duality of security and insecurity के बीच में घूमता है. Yes. है ना सर? Yes. तो हम अभी अगर हम एनी टाइम वी लुक एट आवर लाइफ इन द मोमेंट, इट्स फाइन. खाना आपने खाया होगा, या शायद ज्यादा से ज्यादा आपने, मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड वुड हैव हैड देयर मील. है ना सर? है ना सर? एंड इफ यू हैव हैड योर मील एंड you're mostly 99% of your life is going good only. है ना सर? जिंदगी में, है ना, क्या बोलते हैं, आतंक तो एक ही बार आता है ना. ऐसा तो है नहीं कि आतंक में पैदा हुआ और आतंक में ही पूरी जिंदगी निकल गई और आतंक में खत्म हो गई. ऐसा तो है नहीं ना सर. मोस्टली everybody's life is good only, but we live in a insecurity. कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा. Just imagine, like I was telling my own brother, I was telling कि यार आप यहाँ शहर में रहते हो, है ना सर, दिल्ली का शहर हो गया सर. कितने लोग, कितने अमीर लोग दिल्ली के शहर में रहते हैं, है ना सर. उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वहां पे. द पीपल दे लव द मोस्ट, जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाके सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, रात को भी काम करते हैं, सुबह भी जाके काम करते हैं, करे जा रहे हैं ताकि पैसा कमाए और अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दे. राइट सर? ताकि वो आगे जाके उन्हीं के जैसे मेहनत करे. है ना सर? और फिर वो, है ना सर. सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार भाई ये दिल्ली का, इधर इतना पोल्यूशन है, इतना इतना केओस है, इतना एग्रेशन है, इतना वो है यार. जब तक यू नो माय नेफ्यू, ये 20 साल का होएगा, इसके फेफड़े खराब हो चुके होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो काम जाने के जाते तो हॉस्पिटल जाएगा ये. यस यस. सो ऑल दिस मनी दैट यू आर अर्निंग, ऑल मतलब at what cost? Yes, it will go in medical. Everything will go in medical. Yes. तो वही है सर. काफी actually the foundation to our existence is missing. People don't know why they are living, why they are following anything, what are their dreams. Everything, most people are living basis their insecurity rather than a sense of belief and a sense of life. They are living डर के मारे अपने decisions लेते हैं, ना कि जीने के चक्कर में. The fear is the biggest factor in everyone's life, and they don't know how to live without the fear. Yes, and a society which guiding principle, which motivation is fear, will destroy itself ultimately. Its fears will come true. I call that लोग क्या कहेंगे, LKG. लोग क्या कहेंगे. Every decision is dependent कि लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे तो एक है ही सर इनसिक्योरिटी. मेरा क्या होगा तो और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है. अगर मैं कल बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपके पास एक गाड़ी आ जाएगी, फिर आप बोलोगे यार ये गाड़ी खराब हो जाएगी, मेरे को उसका और चाहिए, ये चाहिए. इट्स endless loop of insecurities. So there are two ways to live life, either with a sense of surrender that जो होगा अच्छा ही होगा, बट मैं जिंदा हूं, मेरे को ये चीजें सेंसिबल लगती हैं और मैं इस वजह से ये काम करना चाहता हूं, और आप वो काम करिए. है ना सर? और फिर जो होगा वो होगा. है ना सर?
एटलीस्ट आपने अपना तो कर लिया, है ना सर. The other way of living life, and most people are living life like this in this world. In fact, me also, many times I also come under a lot of pressure in spite of knowing so much, in spite of having experienced so much. मैं भी फंसता हूँ इस cycle में. So it is very, very difficult to get out of it. But And the fact is that most people in this world are making their choices, making their decisions of how to live their life, what to teach their children, what to do with their time and their energy and their capabilities is based on their insecurities rather than their sense of being alive. है ना सर? and basically what we are today or what life we are living today is based on the what choices we made in the past and what we will live thereafter, what choices we make today. So जीते तो बहुत कम लोग हैं सर इस दुनिया में, बहुत ही कम I, लोग जी रहे हैं सर. I, बाकी सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी डर के yes, मारे. आधी yes, दुनिया डरी हुई है सर. yes. विवेक, आई बिलीव जब आप यूनिट में थे, पैरा एसएफ में थे, तो आपका एक बडी भी होता था. यू वर सपोज टू बी वेरी गरम दल के नेता और वो ही वाज ए वेरी नरम दल के. वो आई हर्ड दैट स्टोरी कि आपका एक बडी तो बहुत ही ही वाज ए वेरी calm and cool and you were one-sided, very hot-headed. Can you just Sir, what was that? And you always compliment each other. In fact, in decision making, you compliment. It is something like having a yin and yang, means one hot, the one cold. So, I बिल्कुल heard. सर. हाँ, तो क्या बोलते हैं, हम दो थे सर. हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन का था. और कौन था वो? एक है सर, आई कांट टेक हिज नेम, ही इज स्टिल सर्विंग. तो Okay. हाँ जी सर. No. तो हाँ सर, तो वी वर देयर. इन फैक्ट ही जॉइंड halfway when I had halfway gone through my probation. He also joined and हमने आधा probation साथ में ही किया. हम कोर्समेट्स भी थे. और क्या बोलते हैं, कोर्समेट भी जन्मदिन थे. भी पता लगा कि हाँ जी सर, एक ही दिन पे पैदा हो रखे. ये Okay. तो वो था. एंड we were just slightly, our core was the same, है ना सर. Our core and intellect and our ability and our core source of why we do what we do was same. His personality was slightly different, my personality was slightly different. That's all. मेरा ये था सर, मेरे को ज्यादा फालतू बातें पसंद नहीं है, मेरे को फालतू काम करना पसंद नहीं है, मेरे को, है ना, फालतू लोगों का बेवकूफ बनाना पसंद नहीं. I like to say what I mean and I like to say it to the face, है ना सर. इस दुनिया में अगर लोग सीधी सीधी बात करना शुरू कर दें तो बहुत बहुत दुनिया सुधर जाएगी सर. प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए. प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना सर. पर हम खुद की डर की वजह से दूसरों से कुछ और करते हैं. सो एनीवे, माय एटीट्यूड एंड माय दिस थिंग, एंड स्पेशली सर इन अ स्पेशल फोर्सेस यूनिट, है ना सर, एक्टिंग बाजी के लिए टाइम नहीं है. गोली चलती है, बहुत बड़ा छेद कर देती है ना सर. लोगों के बीवी बच्चे होते हैं. अगर आपके एक्टिंग बाजी के चक्कर में और आपके ड्रामा और बेवकूफी के चक्कर में अगर कोई जवान मर गया तो उसके बीवी बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? I agree. है ना सर, कोई नहीं रखता, सब भूल जाते हैं, है ना सर. बिल्कुल. किसी के पास टाइम नहीं है. ठीक है Yes. सर, पलटन जितना कर सकती है करती है, फिर भी फौज में करते हैं. हम उनके घर जाते हैं. आज तक क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, हमारे टीम का अगर कोई भी किसी को नुकसान हुआ है तो आज भी पूरी टीम, है ना सर, बात करती है, देख रहे हैं उनके बीवी बच्चों को, है ना सर. पर हर जगह ऐसा नहीं होता और हर इंसान ऐसा नहीं होता, है ना सर. तो our work is very, very serious work. All work is serious. All human beings are doing great. Everybody's got a serious job, but ours is slightly different, sir. है ना सर. Yes. हमारे काम में ये है कि, है ना, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप बैंकर हो या कोई भी हो, आप मरोगे नहीं. Yes. Yes. अगर आपने अपने काम में गलती की तो आपकी मौत नहीं होगी, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपकी तनख्वाह कट जाएगी, है ना, कुछ और हो जाएगा, आपके हाथ पैर सही सलामत रहोगे, आप कल सुबह फिर उठ के कुछ कर सकते हो. बिल्कुल सही. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर. हमने एक गलती कर दी, एक बेवकूफी कर दी, एक एक्टिंग बाजी के चक्कर में कुछ ड्रामा एक्स्ट्रा कर दिया, सीधा गोली लगेगी या बम फटेगा सर, है ना सर. और उसमें चिथड़े उड़ जाएंगे या बहुत बड़ा छेद हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, है ना सर. आप गए तो कोई बात नहीं, आपको तो आपकी तो जिंदगी खत्म होगी. अब क्या है, ब्रह्मांड खत्म आपके लिए, है ना सर. पर जो अगर आपके दोस्त या आपके बडी, आपके जिनका आपका कमांड है, जो आप लोग के आपके लीडरशिप के अंडर आपके साथ चल रहे हैं, आपके एक्टिंग और दोगलेपन की वजह से अगर उनको गोली लग गई तो फिर आपका क्या काम? आप अपने को माफ नहीं कर सकते. फिर आपके ठंडे होने का या आपके बहुत अच्छे डिसिप्लिन रखने का या आपके सॉफ्ट हार्टेड होने का या आपके क्या बोलते हैं
आपके वेल नेचर्ड होने का या उसका क्या फायदा? यस 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 है ना सर? तो हमारे यहाँ नहीं चलता सर ये सब कुछ, हम सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो then वो है सर, है ना सर? So there is no scope for drama or acting or pretending or anything in a special forces unit. जो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है. We are also coming from the same society. Now ह्यूमन nothing बीइंग. is perfect. Nothing is 100% perfect, है ना सर? 100% परफेक्ट हो जाओगे तो आप हेवन में चले जाओगे, है ना सर? यस ये तो यस. अर्थ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा चलेगा. नहीं, So हर परफेक्शन चीज होता है. परफेक्शन एज सच इज जस्ट ए परसेप्शन. Yes, yes, Even exactly, nature is not perfect. Nature is also a up and down. सर. नेचर को तो इम्परफेक्ट हमने बना रखा है सर, तोड़ फोड़ करके. ठीक है सर. Otherwise, nature is perfect. Actually, I'll tell you why, sir. If you see, there are trees, sir. There are trees and there are certain species of animals which are immortal. There are immortal jellyfish. There are trees, evergreen trees. They are immortal. They don't die. It's perfection. Yeah, yeah. Something which is born from a seed and becomes a tree, and it can exist forever. It has no death. It's perfect. Nature is perfect. है ना sir? We have created the imperfection in the world. है ना sir? Heaven and hell are perceptions and they exist here only in the now. Yeah, It is, absolutely. है ना sir? It is our perception of how we have created our world, how we exist, how we think, how we feel, and तो वो है सर कहानी. But in any case, my point is this sir कि क्या कहते हैं, as far as this officer we were talking about, तो मेरे को उस पर भरोसा बहुत था सर. उसको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, मेरे को उसके ऊपर बहुत भरोसा था. इतना भरोसा था कि अगर हम दोनों अकेले ही निकल गए तो हमें लेना बहुत मुश्किल होगा सर. And that is what we call it trust. That is what we हाँ call जी it सर, a trust. हाँ जी सर. It's तो very ये था सर. important part of life. अभी भी ऐसा ही है सर, हमारी दोस्ती कभी टूटी नहीं. मतलब बढ़ती गई, एक दूसरे को और समझते गए, और मतलब हम, मतलब वही वाली बात है सर, अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, पर जब दो ऐसे लोग साथ हो जाएं, है ना सर, तो खुशी खुशी है सर, आप मोमेंट में ही खुश रहोगे, है ना I सर? fully agree. I fully agree किसी with you. चीज का That's डर why. नहीं रहेगा, इनसिक्योरिटी चले जाती है, बड़ी पैर में, है ना सर, कुछ भी हो सकता है फिर तो. ये है सर. Vivek, this was your entire life as far as your 9 parasif is concerned. Once you were out of that, how this idea of CLOB, that is what conquer land, water, air, germinated? सिंपल सर, क्या बोलते हैं, है ना सर, मुर्गी पहले आए अंडा पहले आया वाली कहानी है ना सर? क्या फर्क पड़ता है ना सर? मुर्गी आगे पहले दोनों आए, आगे. नहीं सर, है ना, दोनों को खा सकते हो, दैट्स द पॉइंट. है ना, मुर्गी भी खा सकते हो और अंडा भी खा सकते हो. कौन Yes, सा पहले आया उससे क्या लेना देना, है ना सर? तो वो correct. वाली बात है कि मैंने जब फौज छोड़ी थी सर, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं क्या करूंगा. आई हैड नो प्लान टू डू एनीथिंग. मेरे को ज्यादातर दुनिया में बेवकूफी नजर आ रही थी. बेवकूफी है सर, और क्या है? आप देखो लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं. Correct. एक दूसरे से ऊपर बनना चाहते हैं, है ना सर? एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं. एक्चुअली द वेरी, if you look at the world and the logic that is driving the world, it is flawed like nobody's business. ठीक है सर? हमने all the energy that we harness in the world today तोड़ फोड़ के निकालते हैं, जमीन को तोड़ के, उधर गड्ढा करके, ऐसे करके. If energy is harnessed in a destructive manner, its outcome will also be destructive only. And we live in a universe where energy is infinite, है ना सर? Absolutely. Absolutely. तो, है ना सर? And so, and people spend their entire life comparing themselves with other people. My happiness is based on whether I have got more than the other person or not, whether how much greater I am than the other person or not, how much better I am than the other person or not. This is the biggest flaw that was there, and I did not want to enter and play in this world. I had no interest to compare myself with anybody, to be like anybody else or anything like that. I had no interest, zero. Yeah. All I just wanted, मैं सर पहाड़ चढ़ना था, शांति से अपने जो मैंने सीखा है अपने वेजिटेबल्स प्लांट वांट करके, थोड़ा मीट खाने का मन करेगा तो शिकार कर लेंगे, एंड शांति से जीना है सर. दैट्स ऑल. I had no ambition. I had only one ambition in my life after joining the army, was to become a special forces soldier. I became that. That was the end of it. तो बट जब मैं बाहर आया सर, और अपना कुछ
कर रहा था छोटा मोटा अपने घर पे ही कुछ सिंपल सा कुछ कर रहा था। एंड पुराने जो मेरे टीम के बंदे थे एसएफ के, दे स्टार्टेड कॉलिंग। पहले एक आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया। मैंने सबको बड़ा मना किया कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मत आओ। तो बोलते नहीं नहीं, आप बाहर गए हो, कुछ तो प्लान होगा, कुछ तो करोगे आप, हमको पता है। ऐसा तो ऐसा 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 ही लगता है, जो छोड़ के आ जाता है ना उसका ऐसा ही लगता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जो कर लिया वो कर लिया जिंदगी में। एक जिंदगी के लिए, कई जिंदगी के लिए बहुत है ना सर। तो मेरे कई जिंदगी के एम्बिशन खत्म हो चुके हैं। तो मैं बोला मुझे कुछ नहीं करना। तो बोला नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं, बस हम आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने यार मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं साहब, पैसा तो हम कमा लेंगे, बस साथ रहना है, साथ रहते हैं बस। तो जब ऐसा हो गया, मैंने ठीक है आ जाओ। अब इतने है ना सर, करते करते है ना सर 10 स्पेशल फोर्स के बंदे इकट्ठे हो गए रिटायर्ड मेरे पास। तो जब इकट्ठे हो गए तो मैंने एक बहुत चीज पहले रियलाइज की थी वाइल इन सर्विस। मैंने रियलाइज की थी, मैंने अपने 6 बंदों को देखा था, मैंने पहले भी बोला है सर, मैंने एक बार कहीं पहाड़ चढ़ रहा था सवेरे, और अर्ली मॉर्निंग मैंने पीछे मुड़ के इन 6 बंदों को देखा था। मैंने ऐसे, मेरे को लगा कि यार ये ऐसे बंदे हैं, मेरे ऐसे रियलाइजेशन हुई कि इनके साथ मैंने अगर दूध की दुकान भी खोल ली ना, तो मैं 1 साल के अंदर नॉर्थ इंडिया का सप्लाई उठा दूं। है ना सर, इट वाज जस्ट ए थॉट विच क्रॉस माय माइंड कि ये बंदे ऐसे हैं, और है सर ऐसे। है ना सर, these are the kind of people who are protecting the boundaries of this nation, inside Absolutely, which absolutely. people are playing games. है ना सर, जो ऊंच नीच का गेम खेल रहे हैं बाउंड्री के अंदर, इनसाइड द कंट्री, इन वेरियस सिटीज, पीपल आर प्लेइंग गेम, और भी running rat races, this that, whatever they may be doing. People are doing good things, bad things, whatever they may be doing, but they are doing it because this nation's boundaries are being protected by Absolutely. people like sir. हाँ sir, they are very 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 capable people and Yes, very yes, yes. They are very capable. No doubt in that. अंग्रेजी नहीं बोलनी आती होगी, Hmm. पर आपसे अच्छा सीख के दिखा के आपको हरा देंगे, ऐसे हैं सर। बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल सही। अगर वो दिमाग में घुस गया तो, है ना सर। और फालतू चीजों के पीछे भागते नहीं है लोग, दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लाइफ एंड डेथ, सो दे चूज देयर बैटल्स वेरी वाइजली, दे चूज वेयर टू पुट देयर हार्ट इन। है ना सर। तो ये सारे बंदे इकट्ठे हो गए, एंड मेरा क्या था सर कि मेरे को एक ऑफिसर मिल गया था हॉस्पिटल में सर, एक Yes, एयरफोर्स के yes. ऑफिसर थे, यंगस्टर थे वो। Yeah. उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने स्विमिंग पूल में डाइव मार दी थी, उसका सर लग गया था, और नेक के नीचे पूरा क्रैक होके स्पाइनल कॉर्ड क्रैक हो गई थी, और वो पैरालाइज हो गया था। तो उसको पता लगा कि है ना कि मैं कमांडो हूं। तो एक दिन मेरे पास आया कि सर आप लोग अंडर वाटर डाइविंग करते होगे, स्कूबा डाइविंग करते होगे, कि मेरा जैसा आदमी भी कर सकता है क्या। And he तो was मेरे Air पास, Force officer. हाँ जी सर, जूनियर था सर मेरा, 4 साल की सर्विस में उसका एक्सीडेंट हो गया था, और फिर 4 साल से वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। तो मतलब हालत इतनी ठीक नहीं थी सर उसकी, काफी कठिनाइयां देख रहा था वो। Naturally. नई नई शादी भी हुई थी एक्सीडेंट से जस्ट पहले, एंड 4 साल से मतलब सोच लो सर, आपकी नई नई शादी हुई है, 1 महीने बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, आप यंग से आदमी हो, है ना सर, और आप आपका सब कुछ छूट गया, और आप 4 साल से हॉस्पिटल में बैठे हो। He was है a ना fighter सर। pilot. नो नो सर, ही वाज फ्रॉम ग्राउंड क्रू सर। Okay, ground. तो ये था सर। तो उसने मेरे को आगे पूछा कि सर मैंने सुना है ऐसे ऐसे आप कमांडो हो, आप ये सब अंडर वाटर डाइविंग वगैरह करते होगे। तो मैं बोला हाँ करते हैं। बोला सर मेरा जैसा आदमी भी कर सकता है क्या। तो मैंने उसको बस देखा सर, मैं बोला पता नहीं, मैं रिसर्च करके बताऊंगा। और मैंने उसको वादा कर दिया, पता नहीं सर दिल से निकल गई बात, है ना सर। मैंने उसको बोल दिया कि यार तू टेंशन मत ले, मैं कराऊंगा तेरे को डाइविंग एक दिन। मैंने वादा कर दिया उसको। तो ये वो चीज होती है सर, एक मतलब फौजियों में होती है सर, ये पता नहीं सिविल में भी बहुत होता होगा, पर मतलब मैंने अपने बंदों में देखा है, अपने स्पेशल फोर्स में बंदों में तो बहुत देखा है, एंड फौजियों में बहुत देखा है सर, कि अगर मतलब कोई भी ऐसी चीज होगी ना सर, जिस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब हाँ कर देते हैं सर, कि कर देंगे Actually, यार क्या है। Vivek, I tell you, and this is where the spirituality is. सर सर And this is what is commitment. हमने एक बार जो कमिट कर दिया, तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन तो फिर रास्ते मिल जाएंगे, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर थॉट। एक बार जो थॉट आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन के तरीके यूनिवर्स विल ऑलरेडी गिव यू समवेयर अदर, एंड द दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज अ मैजिकल प्लेस सर, ये माया नहीं, यस, लीला है लीला। ये यस, कृष्णा यस। बोल के गए हैं सर वही लोगों मैंने को। बताया ना कि हाँ सर। स्पिरिचुअलिटी, यदि आप स्पिरिचुअल हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। गो अहेड।
और क्या है सर, है ना सर, देखो डर भी क्या, देखो सर, है ना सर, स्पेशल फोर्स में रह रह के क्या किया हमने, जिंदगी मौत ही तो खेली, और क्या खेला सर। हर बार बाहर निकले, लोग ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, लोग बाहर जाते हैं गाड़ी में बैठ के कुछ करने के लिए, हम लोग बाहर पैदल निकलते थे, है ना सर, 20-20, 25-25 केजी, 30 केजी का लोड उठा के सीधा अंधेरी घुप रात में पहाड़ों में घुस जाते थे, है ना सर। कोई पता नहीं, मतलब वापस आएंगे नहीं आएंगे को छोड़ दो सर। मैं तो कई बार पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऐसे सोचता था कि यार पता नहीं कल सवेरे का सूरज देखूंगा नहीं देखूंगा, पता नहीं सर। तो जब जब यही हमारी असलियत है, और ये असलियत सबकी है, किसी को ऑपरेशन में गोली लग जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट में मर तो ये डर, होना ही है, तो तो डर डरना क्यों? किस बात का। करेक्ट, वेरी राइट। तो जब आदमी डर को छोड़ देता है, डर से बाहर आ जाता है, तब वो अपने दिल से काम करना शुरू करता है। और ये दुनिया ऐसी बनी है, अगर अपने दिल से कोई भी काम करोगे तो वो होगा ही होगा, दुनिया होगा बनी ही, है आपका। हाँ, होगा ही होगा सर, ये वही मतलब लिख के यूनिवर्स ले लो। करता है। यस हाँ जी यस सर। यस यस। सो यू वर टॉकिंग अबाउट दैट फ्लाइट लेफ्टिनेंट। हाँ जी सर। तो जैसे कृष्णा ने बोला है सर, है ना सर, ये माया नहीं लीला है ना सर। तो इट इज अ सेम थिंग सर। जब तक आप डर की वजह से अपने डिसीजंस चॉइसेस इन लाइफ लोगे, तो आप माया में फंसे रहोगे, स्ट्रगल में करते रहोगे, ऊंच नीच चलता रहेगा। पर जिस दिन आप अपने डर को भूल के, या अपने डर 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 को समझ के छोड़ दोगे, जब आपको डर क्या होता है, क्यों होता है, उसको समझ के आप छोड़ दोगे, उसके बाद अपने दिल से आप काम करना शुरू करोगे, तो वो लीला बन जाएगी। आपका ना कोई सक्सेस होगा, ना कोई फेलियर होगा, आप जो कर रहे होगे वही आपका फल होगा, है ना सर। तो वही है सर, ये तो सच सच है सर, ये मतलब घोर सच, यस पिन पॉइंट ट्रुथ। हाँ सर। तो ये है। यस। तो सॉरी सर, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, हाँ सॉरी। नहीं, वो आपने फिर वो अफसर ने, आपने अफसर को आपने कमिट कर हाँ दिया हाँ, कि यस। बस सर फिर तो हाँ बोल दिए एक बार, तो फिर प्लानिंग शुरू हो गई सर, ऑपरेशन हो गया मेरे लिए, है ना सर। मैं जो भी काम करता हूँ फिर मेरे लिए ऑपरेशन हो जाता है वो। तो मैंने बोला इसको हाँ कर दिए, तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की। मुझे रियलाइज हुआ कि इस एक आदमी को डाइविंग कराने के लिए, जो ऐसे चेस्ट डाउन पूरा पैरालाइज है, मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मेरे को उस टाइप का स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होगा, मेरे को डॉक्टर्स चाहिए होंगे, मेरे को उसको बोट पे ऐसे लोड करने के लिए ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो मैंने रियलाइज किया कि यार इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, और नॉट ओनली पैसा, उस टाइप के कुछ एक्सपर्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना सर। बंदे को डाइविंग करानी है, मरवाना थोड़ी ना है सर। तो आई तो ये आई सारा एग्री। सब कुछ मैंने सोचा। तो मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, मेरे जैसे और भी लोग होंगे दुनिया में जो ऐसा फील करते हैं। देयर मस्ट बी मोर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु थिंक लाइक मी, फील लाइक मी, वांट टू डू लाइक मी, है ना सर। ऐसे लोग इकट्ठे करने करने चाहिए। तो मैंने सोचा मैं ऐसा एक ग्रुप बनाता हूँ। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया सर, मैं रियलाइज किया देयर आर 1.2 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज। 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर डिसेबिलिटी। ठीक है सर। दीज आर राइट। एंड एंड दीज आर कंजर्वेटिव फिगर्स, है ना सर। एंड दूसरा चीज क्या है सर कि दिस दिस कैन हैपन टू एनीवन सर। यस। रोड एनी टाइम। एनी टाइम। और एक्चुअली क्या है सर कि everybody in this world, whoever is born, will become disabled at some point in old age, है ना सर। यस जब आप यस। 80-90 साल के हो जाता है इंसान, 90 साल का, 100 साल का, अपने बिस्तर से उतर के अगर वो खुद ही बाथरूम जाने की काबिलियत रखता है, या अपने लिए एक गिलास पानी भरने की काबिलियत रखता है, तो बहुत ही ब्लेस्ड होगा वो। नहीं तो एब्सोल्युटली आज की डेट में पहली बात तो उस उम्र तक कोई आदमी पहुंच ही नहीं रहा है ना सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पहुंच ही नहीं रहा है, और पहुंच भी रहा है तो मतलब सर लोग 50-60-70 साल में डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं सर। अब देखो तो सही, आज की या स्टेट ऑफ हेल्थ हेल्थ एवरेज हेल्थ क्या है लोगों की। इट एब्सोल्युटली। इज लाइक वर्स देन बैड, है ना सर। राइट पीपल राइट। पीपल डोंट ग्रो अप, है ना सर। पीपल ग्रो अप वेरी स्लोली एंड ग्रो ओल्ड वेरी फास्ट। या या है ना सर। 30-40 साल की उम्र तक, है ना, लोग बोलते हैं अरे ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, है ना सर। है ना। क्या बोलते हैं, राइट फ्रॉम हु यू आर गेटिंग मैरिड टू, है ना, हु यू शुड मैरी, व्हाट प्रोफेशन यू शुड टेक, है ना सर। क्या बोलते हैं, 22-25-30 साल के आदमी को तो, है ना, लोग बोलते हैं बच्चा है, इसको क्या पता, है ना सर।
एंड क्या बोलते हैं, जैसे ही वो 50-55 का होगा, अरे तो बुढ़ा हो गया, है ना सर। दिस इज द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज हाउ वी विल एक्सपीरियंस इट। तो ले दे के सर ये हुआ कि दैट आई रियलाइज दैट कि अगर मेरे को, है ना सर, अगर इस एक आदमी को डाइविंग करानी है या इतने सारे लोग हैं जो इस दुनिया में डाइविंग करानी है, देन आई हैव टू क्रिएट अ सिस्टम व्हिच विल ऑफर वैल्यू टू एवरीवन, है ना सर। Yes. जब सबको वैल्यू मिलेगा, जब एबल बॉडीड पीपल विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज टू टू टेक पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, डाइविंग वगैरह, तो उनसे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनके पास पैसा नहीं है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग उनको कमजोर कमजोर समझते हैं, इसलिए Hmm. उनको नौकरी नहीं मिलती है ना सर। तो नौकरी नहीं है तो परचेसिंग पावर नहीं है, तो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, पूरा विशियस सर्कल है सर। तो तो ऐसे करके मैंने एक सिस्टम ऐसे करके बनाना शुरू किया सर, सोल्यूशन बनाना शुरू किया, है ना सर। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन बनाना शुरू किया एंड आई थॉट अबाउट एवरीवन। I thought about how all human beings can benefit from this. From that benefit, I will make financial and network बनाऊंगा resources, and वो resources मैं channelize कर दूंगा people with disabilities के तरफ। एक Yes, ऐसे yes. ऑपरेशन बना लिया सर मैंने। Yeah, yeah, जब yeah. तक ये ऑपरेशन पूरा कागज में कंप्लीट हुआ, तब तक मेरे बंदे पहुंच गए। Oh, very nice. तो जब बंदे पहुंच गए सर, हम सारे इकट्ठे हुए मेरे घर पे। मैंने इनको बोला यार कि ऐसा करते हैं, दुनिया में कुछ भी करने से पहले पहले पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं और जितने लोग हमको पैरालाइज लोग मिलेंगे सबको डाइविंग सिखा देते हैं, है ना Hmm. सर। Hmm. तो अपनी टीम सर शुरू से ऐसी ही रही है सर, कुछ भी बोल दो हाँ बोल देते हैं। Typical Fauji answer, yes, sir. अरे सर, वो तो ना बोलने में नंबर 1 है, पर कोई भी क्रेजी आइडिया बता दो तो हाँ बोल देते हैं सर। कोई भी इम्पॉसिबल टाइप का आइडिया बता दो मेरे टीम को ना सर, तो फटाक से हाँ, बिना सोचे हाँ बोलते हैं सर। जितना इम्पॉसिबल होगा उतना तगड़ा, उतनी जल्दी हाँ आएगा, ऐसा है। अच्छा, okay, okay. हाँ हाँ सर, बहुत देख लिया सर इन लोगों ने, इतनी जिंदगी बहुत देख ली, इतनी जिंदगी अबे, बहुत how देख ली। how how many, Vivek, how many members in the team right now? सर अभी तो मतलब सर हमारी टीम काफी फैल गई है, इन द सेंस कोर वाले जो है सर वो तो है ही हैं, बट बहुत सारे सर सिविल से कितने लोग आए सर। Oh, बहुत सर सिविल से, आई एम टेलिंग यू सर, there are people, Indians, especially Indians from around the world, sir, around the world, thousands and thousands of Indians have written to me on LinkedIn, sir, है ना सर, oh, offering money, offering offering support in any which way, offering कि हम क्या कर सकते हैं, हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। ऐसे करके कितने लोगों ने पता कहाँ कहाँ से लिखा है सर। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशन तो चलता रहता है सर। तो जिस भी टाइम हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं हाँ भाई वॉलंटियर कौन आ रखा है, तो उसको बोल देते हैं हाँ भाई यार आजा। तो वक्त वक्त पे जो भी हमें स्किल की जरूरत होती है, जो भी किसी किसी पर्टिकुलर टैलेंट की जरूरत होती है, तो हम देखते हैं हमारे रिसोर्स पूल में कि किसने वॉलंटियर कर रखा है, उसको बुला लेते हैं, oh, फिर very वो nice. हम करते हैं सर। तो ऐसे चल रहा है सर। Hmm. And how many officers are there overall with you? सर ऑफिसर और जेसीओ जवान तो ना स्पेशल फोर्स में था सर, ना ना अभी है ना सर। मतलब स्पेशल फोर्सेस में वी डोंट, यस ऑफ कोर्स द रैंक स्ट्रक्चर इज देयर in the army, in the special forces, very much the rank structure is there, just like the rest of the armed forces. but but the leadership is not basis the rank, it Absolute, is absolute basis the leaders. capability, and everybody Is a leader. does their particular job, है ना सर। सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, दे आर ट्रेन टू डू दैट, दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट। तो ऐसा ऐसा है एंड ये है सर। नहीं मतलब मैंने तो सर जिंदगी में शायद अपने 14 साल में शायद ले दे के मुश्किल 2 या 2.5 साल मैंने अपने रैंक पहने होंगे सर, है ना सर। तो जब मेरी पीस पोस्टिंग हुई तब रैंक पहने होंगे, नहीं तो यूनिट में तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। So एंड how did you progress after that? How did you progress? Means सो you are सेम थिंग cloud. सर, वही स्पेशल फोर्सेस टीम है, जैसे हम वैसे थे वैसे ही हम यहाँ हैं सर। क्या बोलते हैं, बस ओनली थिंग इज हम यहाँ तोड़ फोड़ और मारकाट के लिए नहीं है सर। हम पीस, लव एंड क्रिएशन, क्रिएटिविटी के लिए हैं सर। वी वांट टू शेयर आवर स्किल्स दैट वी हैव विद हुएवर वांट्स टू शेयर आवर स्किल्स। हम किसी के पीछे भागते नहीं कि आओ हमसे सीख लो, ये कर लो वो कर लो। हम अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, उनको ऑफर करते हैं, जो आता है उनको हम सिखा देते हैं। लोग आके हमसे स्किल भी सीखते हैं और दिल भी सीखते हैं सर। ये है सर। So you must have had the basic teething problem in the beginning. So how did you overcome those? सर
प्रॉब्लम कहो तो मैं ऐसे बताऊं कि मतलब सर समझ ही नहीं आएगा कि करेंगे। बड़े बड़े प्रॉब्लम हुए हैं सर, बहुत बहुत। हम हमारी वी हैव लिव्ड अ वेरी, इवन नाउ वी आर लिविंग अ वेरी एक्सट्रीम लाइफ। हमको ये नहीं पता होता कि कल कैसे होगा, हमें नहीं पता सर कि कल कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, पर हो जाता है सर। हम like पहुंच जाते हैं, है ना सर। वी मीट द टुमारो, है ना सर। We meet the tomorrow. I get up in the morning and meet my day, है ना sir, and the day has everything that I need. It's like that, sir. yeah, that I think that incident of sports minister. लगातार है सर हमारे आर लाइफ क्लॉ में, जिंदगी सीरीज ऑफ मिरेकल्स में चल रही है सर। हम मिरेकल टू मिरेकल टू मिरेकल टू मिरेकल चलते हैं। It's completely miraculous. There is nothing normal happening in our life, sir. So you would like to share one odd miracle with us, with the अरे सर audience? You know, this बहुत है is सर। the learning part of it. Means for a person who wanted to impact the life of millions, I am sure that universe always help you to achieve that target, provided universe your universe does aim not is. universe does not have a choice, sir. Yeah. I'll tell you why, है ना sir. What is the universe? Universe is perceived by whom? Universe is perceived by the mind. Mind, whose mind? Human beings' mind. Yes. है ना sir. If there is no one to perceive the universe, no one to play with the universe won't exist. है ना sir. Infinite possibility. That is why we say infinite possibility. You have Correct. to explore it. So if what you are doing is good for the universe and it helps the universe grow, it helps the universe expand, it helps the universe to become a more peaceful and more vibrant and more evolutionary universe, then the universe has to support what you are doing. Absolutely. Otherwise, if the universe supports only death and destruction, then the universe itself will perish. खत्म हो जाएगा संसार। अगर सिर्फ खराब चीजें, तोड़फोड़ वाली चीजें, मौत और मृत्यु और इस टाइप की नेगेटिव चीजें ही, या डिस्ट्रक्शन ओनली इज सपोर्टेड, then the universe itself will cease to exist, है ना सर। तो जो भी है, पर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सर, बट सिंपल सी छोटी सी चीज है सर, है ना सर। भगवान अपनी जगह, यूनिवर्स अपनी जगह और हम अपनी जगह, है ना सर। We cannot blame our life and blame everything on God and the universe, है ना सर। We should, है ना सर, हम जो भी है छोटी सी कुछ भी नहीं है ना सर। वन फ्लैश इन द यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड में एक बार कोई पैदा हुआ और खत्म हो गया, है ना सर। दैट इज द नेचर ऑफ आवर लाइफ। छोटे से है, कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट। वी मे बी इनसिग्निफिकेंट, यस, बट वी कैन डू अ लॉट सर, है ना सर। our dharma, my dharma is to be myself, है ना सर। दैट इज माय धर्म, कि मैं जिस चीज में यकीन करता हूं, जिस चीज में मैं बिलीव, फर्स्टली माय बिलीफ शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड विजडम, दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन व्हाट समबडी हैज टोल्ड मी, है ना सर। और जो ट्रू नॉलेज एंड विजडम है वो वेदाओं में लिखा हुआ है ना सर। और उसको बहुत सिंप्लीफाई करके इन वेरियस लैंग्वेजेस इट हैज बीन टोल्ड। पेरेंट्स should educate their children. If it is not being taught in school, it should be taught at home, है ना सर। यही हमारी, yes, it's not because you have to be a proud Indian and you have to be proud about this or that. These are factual things which will make your life very very easy and simple, है ना सर। तो वही है सर कि जो भी हो सर, हम चाहे कुछ भी ना हो, we may be nothing, we may be most insignificant particle on this universe that has ever existed, but for me, my life and how I feel and what gives me peace and what makes sense to me is important to me, है ना सर। and I will do that, है ना सर। वो है सर। and especially when you don't want, है ना सर, मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे को दुनिया में कोई कुछ दे दे, है ना। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं है सर। जो मुझे, मतलब, I have got a life that money cannot buy, sir. The richest man on this planet cannot live the life I have lived, sir. He cannot live, sir, because money cannot buy this life, sir, है ना सर। There are things which are so precious in this world that money, any amount of money cannot buy it. Never. Money is just a facilitator, but you have to act. You have to do action to achieve what you want to do. I'm sorry, sir. मैं क्या बोलते बोलते क्या ज्यादा ज्ञान देने लग गया हूँ. That was not my aim. But that's how I think, sir. That is very important also, Vivek. And this is part of your entire doing what you are doing. Sir. But we were talking about the miracles. So, एक दो miracle कहानी बताओ, so that people learn if you are doing something good in the life, people will come to help you.
सर जैसे मैंने कहा, जब ये टीम इकट्ठी हुई है ना सर, जो सारे जो टीम मेंबर्स आए थे वो सब अपनी सर्विस करके आए थे सर। दे हैड देयर पेंशन ऑल, बट इट्स वेरी मीगर सर। 20-22 हजार रुपए में क्या होता है आज की डेट में किसी का, नथिंग नथिंग। है ना सर। 20-22 हजार रुपए में आपके बच्चे छोटे हैं, आप 35 साल के आदमी हो, आपने पूरी 20 साल स्पेशल फोर्स में निकाल के आप बाहर आए हो, आपके बच्चे 5वीं क्लास 6ठी क्लास में, उनको स्कूल भेजना है, उनको खाना खिलाना है, उनके कपड़े खरीदने हैं, उनके बुक्स खरीदने हैं, आपकी मिसेज कभी बीमार हो गई या कुछ हो गया, आपको घर घर को बना के रखना है। 20-22 हजार में कुछ नहीं होता सर, है ना सर। यस पर यस। ये बंदों ने, दे कुड हैव गॉन एंड पिक्ड अप एनी जॉब, कोई भी नौकरी ले सकते थे, उनको बढ़िया है ना 60-70 लाख रुपए की नौकरी मिल जानी थी। आज की डेट में बहुत सिक्योरिटी में नौकरी मिलती है, इस लेवल की मिलती है, और ये तो सबसे टॉप लेवल के ट्रेन बंदे थे। बट ये लोग नहीं गए सर वहां पे, किसी नौकरी के पीछे नहीं गए, कुछ नहीं, सीधे बस पता नहीं कैसे मेरे घर पे इकट्ठे हो गए। ठीक है सर। तो द वेरी एक्ट ऑफ देम कमिंग टुगेदर इटसेल्फ, मैंने तो क्या एक बंदे को हाँ बोल दी कि मैं डाइविंग कराऊंगा तेरे को, है ना सर। मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो एक प्लान बना सकता था, मैं हाँ बोल सकता था और एक प्लान बना सकता था। तो मैंने हाँ बोली और एक प्लान बनाया। जब तक प्लान कंप्लीट हुआ, लोग प्रकट हो गए। ठीक है सर। वो लोग प्रकट हो गए जो ये रास्ता चल सकते थे, है ना सर, जिनके पास वो स्किल थे। टॉप लेवल डाइवर्स आ रखे थे सर, नेवी के मरीन कमांडर्स के टॉप डाइवर आ रखे थे, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के टॉप डाइवर आ रखे थे जो मेरे घर पे आए हुए थे। तो टॉप डाइवर्स, टॉप माउंटेनियर्स, है ना सर, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास। अब ये टीम, तो वहां से हमारा फिर मेरिकल पे मेरिकल चलना शुरू हो गया सर। हमारे पास कभी, मतलब, ना हमने किसी के सामने हाथ फैलाए कि हमें कोई पैसे दे दो, ना हमने कभी किसी से इन्वेस्टमेंट मांगी, ना कभी कुछ नहीं सर, है ना सर। बस कॉल आ गया एक दिन किसी का, डाइविंग कराने के लिए आपको डाइविंग का इक्विपमेंट चाहिए, है ना सर। एक एक डाइविंग का सेट 1-1.5 लाख रुपए के बीच में आता है सर, है ना सर। तो आपको अब पूरी इंडिया ट्रैवल करना है, आपने जितने भी आपको पैरालाइज या डिसेबल्ड लोग मिलते हैं उनको डाइविंग कराना है ना सर, ये सब करना है, तो कहाँ से आएगा ये सारा इक्विपमेंट। तो हम तो ऐसी, हमने तो हाँ कर दी, और एक दिन कॉल आया सर, हमने हाँ कर दी और अगले दिन फोन आया, कहीं अननोन नंबर कॉल आया सर, बंदे ने बॉम्बे से कॉल किया, बोला यार मैंने आप लोगों के बारे में कहीं सुना है, ये वो आप लोग के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उसने बोला मैंने पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, पर मेरे पास, मैंने नया नया डाइविंग डाइविंग इक्विपमेंट का दुकान खोला है। कैन यू इमेजिन दैट सर। एक कॉल आया और यही कॉल था इस बंदे का सर। ठीक है, मैं किसी से, मेरे मेरे को कोई जानता नहीं था, है ना सर, अभी तो लोग जानने लग गए या ये वो है, पर मेरे को मेरे यूनिट के बाहर, स्पेशल फोर्सेस के बाहर, फौज, मतलब फौज के बाहर तो मुझे कोई नहीं जानता था, नो बडी, है ना सर। और इवन इन स्पेशल फोर्सेस सर, हम ज्यादा टाइम, हम तो जंगलों में घूमते थे, है ना सर। अपने खुद के यूनिट के बंदों को हम 2-2 3-3 साल बाद मिलते थे, तो मुझे कोई नहीं जानता था, पर पता नहीं कहाँ से ये फोन आया सर। और ये फोन आया और बंदा बोलता है यार कि मेरे पास डाइविंग इक्विपमेंट की दुकान है। तो मैंने उनको बताया कि देखो हमारा प्लान है कि हम पूरी इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, है ना सर। तो हम पूरा लेंथ ट्रैवल करेंगे और जितने लोग हमको पैरालाइज डिसेबल्ड मिलेंगे हम उनको डाइविंग कराएंगे, तो हमें इक्विपमेंट की जरूरत है। उस बंदे उस बंदे ने सर करीब 20-25 लाख का इक्विपमेंट सीधा सीधा बॉम्बे से भेज दिया सर। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, मैं आज भी उनका, मतलब, सोचता हूँ यार क्या बंदा था वो, पर्पल ऑक्टोपस करके उनकी कंपनी है सर बॉम्बे में, आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, है ना सर। तो जो लोग सुन रहे हैं कभी देखना वो पर्पल ऑक्टोपस। ठीक है। तो उस बंदे ने सर 20-25 लाख का इक्विपमेंट, उसने 10-12 डाइविंग सेट भेज दिया हमारे पास सर, बिना किसी चीज के। तो बोला जिस दिन आपका ये जर्नी खत्म हो जाएगा, अगर बचा हो तो वापस दे देना बस। In fact, this is what Vivek says, that when you do good, universe conspire to do more good to you. हाँ तो मतलब गुड और बैड की भी बात भी नहीं है सर, मतलब अगर आप तो हो, आपके पास शरीर है, आप हेल्दी हो, जो भी हो, है ना, जो भी आपके पास कैपेबिलिटी है, आप तो हो, आप जब दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो, That's what I'm saying. है ना सर, इफ यू कैन डू समथिंग टू सपोर्ट समवन एल्स, दैट इज योर विक्ट्री, दैट इज योर मीनिंग, दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर Absolutely. एवरीथिंग इन दिस लाइफ, है ना। Absolutely. अगला जन्म भी अच्छा होगा। फिर क्या हुआ उसके बाद, जो इक्विपमेंट आ गए? जो लोग जो लोग अगले जन्म के पीछे प्लानिंग कर रहे हैं सर, उनके लिए था वो। तो बस सर, ऐसे ऐसे, मतलब फिर पूरा डाइविंग इक्विपमेंट आ गया। हम लोग हमने
हमने ना भी बहुत देखा सर, कई जगह मतलब लोगों ने या तो हमको कोई उल्टा ही समझ लिया कि ये क्या है ना, कि भीख मांग रहे हैं, क्या है, मैं क्यों करूं, है ना, ये वो बड़े बड़े लोग सर मिले। तो मतलब इन द सेंस कभी किसी ने मेरे साथ या हमारे साथ बदतमीजी नहीं की है ना सर, ना, और करनी भी नहीं चाहिए है ना सर बदतमीजी तो, मैं नो स्पेशली हमारे जैसे लोगों के साथ तो नहीं उसको करनी पता है चाहिए। कि उल्टा पड़ेगा। तो एनीवे तो अ, कई लोग मतलब सर, कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है, तो जो भी है, फंसे बहुत जगह। पर जब भी हम फंसे सर, मैंने ये रियलाइज किया हमारी जर्नी में कि अगर हमने कोई प्लान बनाया है और हम जा रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यस, इट ऑलवेज लाइक दिस। हाँ सर, ये बहुत सिंपल चीजें हैं लाइफ में जो एक्चुअली सर बचपन में ही सिखा देना चाहिए बच्चों को, जब उनका दिमाग यंग होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल्स एक बच्चे को सिखा दिया जाए तो पूरी जिंदगी अच्छा करता हुआ रॉकेट की तरह निकलेगा सर, है ना सर। पर आजकल सब बंदे बंदे डरे डरे ऐसे ऐसे काटते हैं जिंदगी, हर एक सांस को उनको लगता है पता नहीं कल क्या हो जाएगा, क्या होगा कल, है ना। लोग बोलते हैं यार पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद नहीं जाओगे जहां पैदा होने चिंता आज की करो, कल की क्या करना है। नहीं, अगर चिंता भी करना है सर, है ना सर, मौत तो मौत है ना सर। तो है ना, लोग सोचते हैं आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद वही होगा, वहीं जाओगे जहां पे आप पैदा होने से पहले थे, है ना सर। पैदा होने से पहले जहां थे मरने के बाद भी वहीं जाओगे, तो बस। सही है। और है क्या, अभी है। तो जिंदगी में आप, अगर कोई भी आदमी अगर अपने आप से छोटा सा भी सोच के पूछेगा तो उसको सबसे ज्यादा अगर खुशी ही चाहिए, पीस ऑफ माइंड ही चाहिए, एक एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस चाहिए, तो कब मिला है वो आपको सेंस ऑफ ब्लिस, जब आपने किसी और के लिए कुछ किया है तब मिला है, Absolutely. When you help others. Yes, yes. बस। Yes, yes. That is, अगर that is, that, सब लोग ऐसे जीना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से डरना बंद कर देंगे, तो हेवन विल बी ऑन अर्थ सर, है ना सर। actually, there is a statement which says that success is what you get, but significance is what you can give to others. सर So, no, always, and people don't know that how to achieve significance. So they always look for the success. Step charte jayenge, monetary success. But they never realize that the legendary and the significance in life will only come once you are capable of impacting someone's life, others' life. But there was देने में जो another, खुशी है ना सर, देने yeah, में जो खुशी है, वो किसी के किसी में, काम आने में जो खुशी है, वो वो और किसी किसी में, चीज में नहीं है। absolutely. There is no denying the fact. There is no denying the fact. And ऐसा यदि सब सोचने लगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल सर। पर ये भी चीज है सर, है ना सर, एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोली सर आपने, कि अगर ऐसा सब सोचने लग जाए तो प्रॉब्लम क्या है सर दुनिया में, कि ऐसा सब नहीं सोच रहे हैं, है ना सर। ऐसा बहुत कम लोग सोच रहे हैं, सोचना सब चाहते हैं, पर बोलते हैं यार अगर मैं ऐसे सोचूंगा मेरे पास मैं बिक जाऊंगा और बाकी तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है सर। बट द थिंग दैट पीपल हैव टू रियलाइज इज दैट योर सेंस ऑफ वेल बीइंग, आपका अच्छा लगना, आप आपके लिए है, और है ना, इन द सेंस इट इज नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल डू इन दिस वर्ल्ड, इट इज व्हाट हाउ यू वांट टू लिव दिस लाइफ, इट इज योर लाइफ, है ना सर। Absolutely. अब Yeah. है ना, दूसरों की जिंदगी दूसरों की जिंदगी, उनको जो करना है अपनी जिंदगी के साथ उनको करने दो, है ना सर। आप Here, अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो, आपकी आजादी उसी में है कि आप क्या करना चाहते हो, आप उसको करो, वही आपका फल है, वही आपका सुख है, वही आपका सिग्निफिकेंस है, वही आपका so, सक्सेस है। in fact, इसका भी एक चीज मैं आपको बोलूंगा छोटा सा। प्लीज प्लीज सर, प्लीज My सर। life is my responsibility, my obligation, and my duty towards my success. Nobody else. So there सर is no CBE. No CBE means no complaint, no blame, no excuse. बिल्कुल The सर, day बिल्कुल सर। the day you learn this, you will have no philosophy, no fear. सर सर हमारी पूरी जिंदगी कंप्लेन, ब्लेम और एक्सक्यूज में निकल जाती है, and we forget that everything I am responsible what is happening around me or to me.
बिल्कुल सर, एंड दिस होल, है ना सर, जजमेंट पे तो दुनिया रहती है, लोग अपने आप को दूसरों की तराजू में नापते हैं, है ना सर। वही माया और लीला, माया और लीला। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो है सर, एंड इट इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया है, जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यही है ना सर। जब अब क्या करेगा आदमी, जब व्हेन somebody does not know better, he does not have any other options, he will do what he has been told, that's it। तो इनफैक्ट वही है सर थोड़ा सा। इनफैक्ट एक और मैं तो आपको फ्रेज बताऊंगा, याद आ रहा है मुझे सर जब सर आप ये बातें कर रहे हो, सर कि पीपल आर लिविंग इन BMW। सर Now BMW is not car here. People सर are blaming, mourning, and whining. They are all in this mode. Either they are blaming somebody, or they are mourning all the day and night, or they are whining. And they should get rid of that. If they can get rid of the CD and the BMW, the life will become beautiful. Not only their life, even their surrounding environment. And that's what you say that. ब्यूटीफुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, ये तो मैं भी याद रखूंगा सर। अभी जाते ही डायलॉग मारूंगा सर ये। We learn from each other. सर 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 बिल्कुल अच्छा, सर। तुम्हारा एक और मिरेकल था जो, जब बिकॉज अभी तुम्हारे इक्विपमेंट आ गए, बट पूल भी चाहिए ना। हाँ सर, अब मैं, है ना सर, चंडीगढ़ में हमने जो भी किया, फिर दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में, है ना, रेड क्रॉस का एक पूल है कनॉट प्लेस में, उधर में जाके किसी को बताया था, तो उसने बोला था हाँ हाँ ये तो अच्छा काम कर रहे हो मेजर साहब, आपको हम पूल दे देंगे वगैरह वगैरह। हम सारे दिल्ली पहुंचे कनॉट प्लेस में, और वो बंदा गायब, मिलने के लिए तैयार नहीं सर, वो मना कर दिया उसने। अब हम सारा खड़े हुए वहां पे, इतना सारा इक्विपमेंट लेके, हमें पता नहीं रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता सर। ठीक है सर। और फिर बस एक कॉल, फिर से सर एक कॉल, मैं तो कॉल का वेट करता हूँ सर, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक कॉल आता है सर। तो कॉल आया सर, एक कॉल आया, हमारे एक एक दोस्त का दोस्त था सर, उसने फोन किया, कहाँ हो सर, ये वो, तो हमने बताया ऐसे, अरे बोला सर मेरे घर आ जाओ। उसका छोटा सा घर था सर, एक, है ना सर, छोटा सा घर, उसमें, है ना सर, एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम सर, वो अपनी एजेड मदर के साथ, जो थोड़ी अनवेल है, उनके साथ रह रहा है ना सर। यंग पर्सन, 25-26 ईयर ओल्ड, मेहनत कर रहा है जिंदगी में, खुद के फादर इज नॉट देयर, खुद खुद अपनी माँ बाप, माँ का ख्याल रख के रोज मेहनत करके पैसा कमा रहा है, और लुकिंग, वर्किंग एंड लिविंग हिज लाइफ सर। इतना बड़ा दिल सर उसका, उसने हमने 10 लोगों को घर बुला लिया, उसने पूरे डाइविंग इक्विपमेंट के साथ। ठीक है सर, माय गॉड। पूरा सिलेंडर, चार्जर वार्जर, सारे सर, सब कुछ, पता नहीं क्या क्या था हमारे पास, 2 गाड़ियां भर के सामान था। Was he friend of someone or knew ही वॉज somebody? ही वॉज फ्रेंड ऑफ वन ऑफ आवर टीममेट सर, हमारे टीम के एक बंदे का दोस्त था सर। तो उसने घर बुला लिया, हम उसके घर पहुंच गए सर, एंड हम लोग वहां पे सर, हम लोग सारे कारपेट पे सोते थे, है ना सर, हमारे चारों तरफ पूरा डाइविंग इक्विपमेंट होता था, बीच में हम सारे सोते थे। रात भर प्लानिंग चलती थी, ये करेंगे वो करेंगे, जो जो ऑब्स्टिकल्स होते थे सारा, बातें करते 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 पूरी रात बातें चलती थी, और अगले दिन सुबह जाके काम करते थे सर हम। एंड विद इन like 3 days sir, from nothing I found myself sitting in front of the sports minister sir, श्री किरण रिजिजू उनके सामने बैठा हुआ था, that time sports minister। and I must compliment that man sir, है ना सर। मैं सर स्पेशल फोर्स से आया हुआ, है ना सर, ना दुनिया का कुछ पता नहीं ज्यादा कुछ, है ना सर। तो मेरी आदत होती सर, मेरा शर्ट का बटन खुला रहता था सर। हाँ, तो मेरी शर्ट का बटन खुला रहता था, और मैं वैसे ही चले गया उनको मिलने के लिए, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ मेरा शर्ट का बटन खुला हुआ है ना सर। तो मैं उनके सामने, वो मिले, मैं बैठा, और मैंने उनको उनको बताना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा, बताइए मेजर साहब, क्या करते हैं आप, क्या क्या कर रहे हैं करके। तो मैंने उनको बताया कि सर सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है, ऐसे करके। हमारे इतने वेटरन्स हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं, वो 15-15, 20-20 साल ये इतना सारा स्पेशलाइजेशन हासिल करके फिर जाके कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इट्स सच अ वेस्ट, है ना सर। कि अगर ये स्किल्स जो हमने सीखे हैं, स्पेशल फोर्सेस में सीखा है, डाइविंग सीखा है, माउंटेनियरिंग सीखा है, अनआर्म्ड कॉम्बैट सीखा है, इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सीखा है, दूसरों को बचाना सीखा है, इतना खुद को बचाना सीखा है, कहीं कुछ भी करने की ताकत रखना सीखा है, सेल्फ बिलीफ सीखा है, सेल्फ रिलायंस सीखा है,
अगर ये चीज हमने ऑर्गेनाइज करके अपने पूरे यूथ को सिखा दिया इंडिया के अंदर, सोचो ये देश क्या बन जाएगा सर। करेक्ट, करेक्ट, है ना सर। कोई आंख उठा के नहीं देखेगा हमारी तरफ, बोला इनको शांति से बैठे रहने दो। वेरी गुड पिच, वेरी गुड पिच। मतलब कॉमन सेंस सर, मेरे पास जो मैं बिलीव करता हूं मैंने उनको बोल दिया सर। तो वो सुन रहे थे एंड, है ना, एंड ही केप्ट लुकिंग एट माय ओपन कॉलर सर। तो है ना, तो बट आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन। ही डिड नॉट टेक इट टू हिज ईगो सर, दैट्स अ लीडर सर। He did not take it to his ego. He did not get disrespected. है ना sir? He had his own self-esteem and he paid attention to what I was saying rather than what I was wearing. है ना sir? And फ्रॉक करके सर 3 दिन बाद तालकोटरा पूरा पूल उन्होंने हमको हैंड ओवर कर दिया और खुद आए सर, खुद हमारे साथ डाइव किया। और हमारे मतलब उनके चक्कर में इतने सारे जर्नलिस्ट आ गए, मीडिया आ गई, ये वो पब्लिसिटी हो गई। इतनी पब्लिसिटी हुई कि बॉम्बे में लोगों को पता लगा। एशियन डाइविंग एक्सपो पहली बार बॉम्बे में हो रहा था, बॉम्बे वालों ने हमको बॉम्बे बुला लिया, फिर हम बॉम्बे चले गए। ऐसे करते करते सर मिरेकल पे मिरेकल पे मिरेकल पे मिरेकल सर, मैं आप मतलब सर किताब लिख दूंगा। तो मतलब देयर इज अ व्हाट माय पॉइंट इज दिस सर, what I have understood, है ना sir, I am a person who has seen life and death. I have taken life and I have stood in the end of the barrel myself also. कई बार मैं खत्म हो सकता था, पता नहीं कैसे खत्म नहीं हुआ, पता नहीं, है ना सर, पता ही नहीं, कुछ चांस ही नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ। तो क्या होता है सर, जब आदमी जिंदगी लेना और जिंदगी देना सीख जाता है ना सर, तो फिर बाकी सब कुछ झूठ, फरेब, माया, भ्रम सब खत्म हो जाता है। क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई खत्म कर देगा, मैं तो बहुत पहले खत्म हो चुका हूँ सर। I know. तो है ना सर, तो फिर अब क्या बचा मेरे पास, जिंदगी जीना, है ना सर। और जो मुझे विदाउट फियर व्हाट आई बिलीव दैट आई शुड डू, आई एम डूइंग दैट, दैट्स ऑल। दूसरों को बड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, कोई बोलता है यार तो बहुत ही पता नहीं बहुत अच्छा आदमी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचता सर। फॉर मी दिस इज कॉमन सेंस, व्हाट आई एम डूइंग इज कॉमन सेंस। It is good for me, it is good for the rest of other people also, that's all. Basically the Vivek problem क्या है, the common sense is not very common. कोई बात नहीं सर, हम लगे हुए हैं, कॉमन कर देंगे। That is a wonderful thing, you can do that Vivek. And तो बस सर कॉन्स्टेंटली मिरेकल टू मिरेकल टू मिरेकल। एक्चुअली सर हमारे साथ कोई नॉर्मल काम तो आजकल होता ही नहीं है, सब कुछ मिरेकुलसली होता है सर। और हमने जो जो काम करते गए उसका नाम होता गया और दूसरे लोगों को पता लगता गया और दूसरे लोग बुलाते गए, हम वहां जाते गए, बढ़ता गया बढ़ ही रहा है सर, ऐसे ही हो रहा है सर। अब आजकल तो हाँ सर, तो ये है सर, बस यही है कि हम जैसे रहते हैं सर, हमारी टीम जो जैसे रहती है वो कटिंग एज है सर, कटिंग एज। इस तरफ भी खाई, उस तरफ भी खाई, है ना सर। कल का पता नहीं, कल एक बीत गया है और कल एक हुआ नहीं है। तो हमारे पास मतलब हमारा कॉन्स्टेंटली इतना कटिंग एज चलता है सर कि कुछ नहीं पता कल क्या है, होगा नहीं होगा, बहुत बदनामी भी हो सकती है सर, है ना सर, है ना सर। नहीं, in fact somehow see, I don't believe in that Vivek, because you know failure is part of life. And failure is always a step toward the going ahead. If you take fail forward, so आप down तो हो सकते हो, लेकिन बदनामी नहीं होगी, क्योंकि you are an action taker, and action taker कभी भी फेल नहीं होता। और जो एडिसन था 10,000 times फेल हुआ था before he invented the pump. And you are going in that direction. Yes, you will come across the obstacles which you have been overcoming day by day, and the universe conspire to help those people who take action. I don't believe in success and failure, sir. I don't believe in success and failure. I believe success is being able to live in the moment as a free man, living as a free man, doing things that are meaningful to you. That is success, sir. And success is not something that is going to happen to me in the future, sir. I live a successful life, sir. I am successful right now. है ना सर, ये है सर। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे बाहर से मिल जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं जैसा हूं वही मेरे लिए सक्सेस है सर, है ना सर। So that is one thing. But when I say आज, है ना सर, the world is very fragile and fickle minded, sir, है ना सर, and very opinionated and judgmental. That is the nature of the world, है ना सर, nature of Maya, है ना सर।
आज Yeah. जो 10,000 लोग ताली बजा रहे हैं, है ना सर, कल उनको कुछ और होगा तो पत्थर भी फेंकेंगे, है ना सर। ये है दुनिया की वो। तो ना मुझे ताली से फर्क पड़ता है, ना मुझे पत्थर से सर। करेक्ट ना मैं करेक्ट, वो तालियों के वही, लिए जी रहा हूँ, ना मैं तालियों के लिए जी रहा हूँ, ना मैं पत्थर से डरता हूँ सर, है ना सर। दैट इज द मैं तो फ्रीडम, बस जो हूँ, बस वो सर। दैट इज द That's it. फ्रीडम, दैट इज द फ्रीडम। ना मैं बड़ा हूँ, ना किसी से बड़ा हूँ, ना किसी से छोटा हूँ, मैं बस मैं हूँ सर। और मैं आई एम डूइंग थिंग्स दैट मेक सेंस टू मी, सिंपल एज दैट सर। और मतलब कुछ है नहीं ऐसा, दैट्स ऑल सर। So how this Operation Blue Freedom came means, पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी जो आपने डिसाइड की है, आई एम श्योर हर वर्ड के पीछे आपका कोई ना कोई मीनिंग हो, थॉट हो। तो मैंने क्या रियलाइज किया सर कि एक्चुअली जो डिसेबिलिटी है सर, डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू डू समथिंग वाली जो कहानी बोलते हैं सर, है ना सर। मैंने रियलाइज किया सर, जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग दीज पीपल विद डिसेबिलिटीज, people who are paralyzed, people who are suffering with this that, मैंने रियलाइज किया सर कि इनके अंदर जो स्पिरिट है और जो स्पेशल फोर्सेस के अंदर जो बंदे के अंदर स्पिरिट होती है, बड़ी सेम ही है सर, ऑलमोस्ट। सेम। मतलब हाँ, अरे सर, आप नेक डाउन पैरालाइज्ड हो, है ना सर, और आ, आ, आपके पास मतलब बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं सर छोटी छोटी चीजों पे। यस 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 स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो बिल्डिंग से कूद गए, है ना सर। यस यस, बीवी बीवी ने तलाक दे दिया तो बिल्डिंग से कूद गए, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा क्लास में फेल हो गया, है ना सर, फलाना, उसको नौकरी ही नहीं मिली तो क्या बोलते हैं, सुसाइड कर लिया, है वो ना सर। देखो ना, कॉफी कैफे वाला, कॉफी कैफे डे। सर जो भी सर, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, बट दुनिया मतलब इतना सेंसलेसनेस हो गया है दैट वी डोंट नो हाउ टू, we don't understand what is success and failure, we don't understand our life, we get so depressed, and our happiness is so dependent on the outside world of success and failure and judgments, that we are ready to kill ourselves to यस escape. So यस now यस, just imagine sir कि एक बंदा जिसकी जो अच्छा खासा खेलता बड़ा हुआ है, सब कुछ अपने बलबूते पे करता हुआ, फुटबॉल खेलता था, ये करता था, वो करता था, फिजिकली बहुत तगड़ा था, और एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, है ना, कहीं से गिर गया, कुछ हो गया, नेक डाउन पैरालाइज हो गया सीधा। अब उस आदमी के को जीने के लिए क्या बचा सर उसके पास। बट फिर भी आदमी जब अपनी जान नहीं लेता है और फिर भी हर क्षण में कुछ जीने का वजह ढूंढ लेता है, वही है सर स्पेशल फोर्सेस, है ना सर। विवेक विवेक, तो मैं जस्ट 5 सेकंड का ब्रेक लूं जरा, 5 सेकंड का। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सॉरी, माय अपोलॉजी। नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज डोंट से सॉरी सर। इनफैक्ट विवेक, जो आपने ये बात कही ना, जो कि स्पेशल फोर्सेस का जो माइंडसेट है और डिसेबल्ड पीपल का जो माइंडसेट है, उनकी थॉट प्रोसेस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से लड़ने का कहीं सेम होता है। I just reminded of one interview which I did roughly a year back of Deepa Malik, Mrs. Deepa Malik, wife of an army officer only. She is a chest down paralytic, but today she is a Paralympic silver medalist. She is a Padam Shri. She has won so many medals, and she started to explore her strength, what she had. She started swimming. First thing she did, she crossed the Yamuna in Delhi. That is where she started water therapy, and now she's a legend. So ये जो स्टेटमेंट आपका इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ये आइडेंटिफाई किया कि स्पेशल फोर्सेज का जो थॉट प्रोसेस है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो कहीं हैंडीकैप लोगों में या डिसेबल्ड लोगों में आ जाती हैं। प्लीज गो अहेड।
Yeah, baby. Sir, आपकी आवाज कट रही थी थोड़ी सी, but I know I've heard of Mrs. Deepa Malik sir. She's like वही है सर, वो स्पिरिट वाली बात. तो anyway सर, ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो कहानी है सर, तो the simple words, you know, what we realize is that through disability, because if we research into disability, what we realize sir, जब हम बंदों को डाइविंग करा रहे थे, जब ये पैरालाइज्ड पीपल थे, हम उनको डाइविंग करा रहे थे, एंड थोड़ा रेगुलरली ओवर स्ट्रेच हमने कराना शुरू किया, we saw healing happening sir. We saw a lady whose leg was paralyzed for 7 years. Her leg started moving in the fifth, पांचवें डाइव में सर वो पैर हिलना शुरू हो गया. ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखने शुरू किए. तो हमने इनफैक्ट इसका रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर दिया. There are people, paralyzed people who came from various parts of India and came and did diving with us. 10-10 दिन के बाद हमारे पास रह के डाइविंग किया सर, एंड उनकी बॉडी हिलने लगी सर. मतलब लंग एक्सपेंशन बढ़ गया, मसल टोनैलिटी बढ़ गई, मसल में स्ट्रेंथ आ गया, बहुत सारी चीजें, स्विमिंग करना शुरू कर दिया. मतलब सर बहुत साइकोलॉजी चेंज होनी शुरू हो गई सर, है ना सर. सो वी सॉ दैट यार ये इतनी हीलिंग कैसे हो रही है. So we realize कि if we can research, है ना sir, if you learn how to fix something that is broken, ना sir, then you can become an artist, है ना sir. कोई टूटी हुई चीज को अगर आपने जोड़ना सीख लिया, है ना sir, तो फिर तो आप कुछ भी बना सकते हो ना sir. You will become the maker then, है ना sir. तो what I realize sir, that if we can create a system which is self-sustaining, where people with disabilities can come and they can go undergo cutting edge rehabilitation, they can get reskilled to pick up employment, they can be re-educated in a field that is more suitable to their talent and their particular physical condition, and if they can be connected to an employment network which is looking for people like them with the spirit like them, if we can create an ecosystem like that, and then healing is going to happen. जो बंदा आएगा उसको कटिंग एज रिहेबिलिटेशन का मौका मिल रहा है, रीस्किलिंग हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसका माइंड तो चेंज होगा सर. His consciousness will change, his mind will change, and that will have an impact on his body. His body will start healing. So if we reverse engineer it and we keep researchers in the background, and these researchers keep picking up data at various points of time कि भाई डाइविंग करने से पहले इसका हार्ट रेट कैसा था, इसका वाइटल्स क्या थे, डाइविंग करने के बाद क्या चेंज आया, ऐसा चेंज क्यों आया, ये खाना खाने से इसके ब्लड में क्या फर्क पड़ रहा है, वो चीज करने से क्या कर रहा है. So the healing is assured, but how that healing is happening, if we can decode that over a period of time, we will collect data, and that data will give patterns. Those patterns will essentially give us how to unlock human potential, and that can be applied to everyone. In fact, it's such a model where able-bodied people will be able to realize their potential from the data that is received from people with disabilities. Yes. It means one can achieve the maximum potential what he has. Yeah. People with disabilities will give freedom to able-bodied people, है ना sir? So that is what we saw sir, and मेरे को what I realized is कि ये संडे मंडे वाला काम नहीं है, ये ऑपरेशन है सर, है ना सर. This is an operation, just like an operation where we used to go to destroy the enemy. This is an operation where we are going to create something for this world, sir. है ना sir? What is the word blue describe in this your name? Sir, when you look at the earth from space, it looks like a blue ball, है ना sir? So Operation Blue and freedom is freedom, sir. Freedom for everyone, है ना sir? I wanted to decode that, because always when you have a word like I have had a warrior, I have thought my niche or my movement is win life like a warrior, where the warrior I have coded is W is for winning mindset, A is for alter your attitude of gratitude, the R is remove clutter from your life, the next R is reinvent yourself, the I is you become something who inspire others, and the O is overcome your fears and procrastination, and the last R is you become free and reap the rewards of life. Wow, sir.
That is warrior. Win life like a warrior. So I thought I will definitely ask Vivek what was the thought of Operation Blue Freedom. Simple सी life है sir, है ना sir? क्या है? You can think big things, small things. These are all things in everybody else's mind. Some things will seem impossible, some are possible, some are not so much possible, वगैरह वगैरह. I don't think like that, sir. It's very simple, sir. कि हाँ, it makes sense, है ना sir? कि by researching into disability itself, by aggregating the disability sector worldwide, we'll be able to create an ecosystem which will give rewards to everyone. जो लोग है ना सर, आज के लोग सोचते हैं अरे मैं डिसेबल्ड नहीं हूं, वो डिसेबल्ड है, बट एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि पहली बात तो डिसेबिलिटी किसी को कभी भी हो सकती है, जैसे मौत कभी भी किसी को कभी भी आ सकती है, वैसे डिसेबिलिटी भी कभी भी किसी को कभी भी आ सकती है. हाँ सर, कट गया था. बीच में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. सो विवेक जो बिल्कुल सही है. सी डिसेबिलिटी हुआ इनफैक्ट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. नोबडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर. नोबडी. ये तो नोन है सर. एवरीबॉडी इज गोइंग टू ग्रो ओल्ड एंड गेट डिसेबल्ड. एवरीवन. Yes. So if we research into disability today, if we research into disability and learn how to heal ourselves today through disability itself, by learning how to heal yourself, and sir, how to fix something that's broken, the data, the information, the knowledge, the wisdom, the techniques that we will get from this research will make every human being's life easier on this planet. And sir, it will. Simple logic है sir. But in fact, the thought process of the cycle which you mentioned about how one can extract the full potential of a person, because what we perform, our performance is always what? Your potential minus your limiting beliefs. Now you given the cycle of that, that how you can achieve this entire cycle of a disabled people to a full potential and he become like a able person. This is what is happening in the normal case also, Vivek, that people, because of one incident which has happened in their life, somewhere, sometime. Now, when the same situation comes again, because of the fear, they don't take any action. True. True. And then, because they don't take action, they remain in the same loop. And that negative performance cycle में they घूमते रहते हैं. So to break that cycle, what you have suggested, one has to act. Whenever you are fearful, you have to overcome that fear and take action so that your performance cycle improves and finally you achieve what you want to achieve, or rather you exploit your full potential. And as you mentioned number of times, that every human being has got a infinite potential. It's only you have to explore it. मेरे को ना सर फौज में लगता था कि हम ही है ना सर. फौज में मतलब स्पेशल फोर्सेस में था, मेरे को लगता था हम ही है यार, हम ही है. जब मैं बाहर आया ना सर, मेरे को धीरे करके आज मैं इस रियलाइजेशन पे हूँ दैट स्पेशल फोर्सेस इज अ माइंडसेट. इट इज देयर potential in everyone, sir. Everyone. Yes. Everyone is capable of being God-like. Yes. है ना sir? Yes. But it is who knows it and who acts upon it. है ना sir? And आपकी खुद की खुशी उसी में ही छुपी हुई है. तो जो जैसे वो कहते हैं ना सर, वो ब्रिग जो पूरे जंगल में कस्तूरी के वो ढूंढ रहा होता है, उसको स्मेल आ रही होती है, वो कस्तूरी ढूंढ रहा होता है, पर वो कस्तूरी होती है आपके अंदर ही है. यही सत्य है सर इंसानों का भी. The greatest of good is within us. The greatest of capability is already within us. We are born perfect. We have everything. God is within us, है ना sir? So, but we think we are very small and insignificant, and we are very less. That is why we behave very less, sir. है ना sir? ये है sir.
विवेक, एक और ये जो थॉट है, इनफैक्ट one day I was on a news channel and we were discussing about this Ukraine war. Okay, Sir. so everyone was talking about that, who is stronger, who is doing what, whether US or Russia. When my turn came, I said, yeah, everyone is talking about that, who can defeat whom. But I said, इतने सारे बड़े लीडर हैं, चाहे वो यूके से नाटो से ही, चाहे वो अमेरिका से ही, चाहे वो रशिया से ही, इतने लीडर हैं, इनमें से कोई भी लोग शांति की बातें क्यों नहीं करता है? नोबडी टॉक्स के हाउ टू ब्रिंग पीस, हाउ टू स्टॉप दिस mindless killing of each other. So many human lives are being lost. And the point was, the day prior, this gentleman Biden visits Ukraine, and he talks about, I am going there to, for the peace. But then he announces $500 million worth of assistance in terms of weapons and ammunition. Similarly, Russia talks of the peace there, but he is sending the missiles, he is sending, killing the people there. I said, this do something, with duality. बोलते कुछ है, करते कुछ है, and nobody talking peace. What your thought process, the mindless killing which is going on for last 1 year, as a spiritual person? वही वाली बात है सर, देखो पता सबको है पर करता कोई नहीं वाली कहानी है ना सर. So it's simple that for the world, from a spiritual perspective, I'll say, from a human perspective, I say this is stupidity that is going on. Yeah, है ना sir? I agree. From a human perspective, yes, mindless killing of human beings, mindless bloodshed, mindless sale of weapons, arms and ammunition, mindless business going on, and who is profiting at the end of the day? All of this, है ना sir? But ये जो भी हो sir, as a human being, you know, you can come up with a variety of conspiracy theories, you can come up with a variety of solutions to a variety of problems. But and spirituality, what happens is you have the core, you know, core understanding of things. तो core understanding ये है सर, ये है दुनिया का nature है duality. इसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी, इसमें नाश भी होगा और creativity भी. Destruction and creation will happen simultaneously and it will happen together, and it is a continuous cycle, है ना sir? तो there will always be good and evil in this world for this world to exist. There will always be an aggressor and there will always be an aggressed, है ना sir? There will always be a hero and there will always be a villain. That is the nature of this world. Instead of trying to struggle with only hero hona chahiye or villain, that is what creates more chaos. If there is an acceptance of the nature of the world at an individual level, actually one human being can change this world if he realizes it, है ना sir? क्योंकि ये सारा world, and it has happened in the past. Yes. So it is just a matter of public realization that it is the nature of the world for duality. The nature of the world is dual. There will be good and evil. There will be war and peace. There will be, you know, love and hate. There will be these opposite ends of the spectrum. That is why, you know, there will be life and death, and there will be suffering and happiness. That is the nature of our world. That is the nature of our existence. When you accept that, is when you come into a position to change things. If you don't accept and you keep denouncing one thing and calling the other thing better and this, that, so you will be party to that struggle, you will be party to that chaos, you will be party to that suffering, and you will never be party to the solution. है ना सर? तो अगर दुनिया बदलनी है तो खुद को बदलो, है ना सर? अपनी सोच बदलो, अपने नजरियों को बदलो, अपने एक्शंस को बदलो, आप अपने आप को समझो, है ना सर? अपने आप को समझो और जो चीज आपको पीस ऑफ माइंड देती है उसको ज्यादा करो, जो चीज आपको आपके माइंड को परेशान कर देती है उसको कम करो, बस. So ultimately, from a spiritual perspective, I accept the world the way it is. I understand why there is war and why there is peace. I understand why there is you know, good and evil. I understand it. I understand the economic cycle of this world also. I understand, you know, power and weakness. I understand all of these things. So when I look at the world now, it is my choice which I want to follow. I know. So what makes sense to me, sir, is firstly acceptance of how the world is,
and then be the change that you want to see in the world. Yeah, you be yourself. That's it. बस Yeah. सर, दुनिया बदलो ना बदलो, खुद को जरूर बदल लेना सर, है ना अगर सर? खुद को सब बदल देंगे तो दुनिया बदल जाएगी अपने आप। बस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये है सर। एक और चीज है विवेक, that in life clarity is a very important aspect, Sir, you know, and in everything mindset plays 80% role, skill is just 20%. sir, Now, how did you implement these aspects in your vision, mission or vision to serve the humanity, and which you plan to do through peace, sharing, caring, rather than the war, division, and determination or destruction, by creating survive, stabilize, and thriving mindset? This is the statements which you, it is your philosophy. So sir. clarity plays a very important role. How do you implement your vision and mission which you are implementing? Sir, every day is a learning process. Core fundamentals clear है ना sir? Who am I? What am I doing here? Why is this world like this? है ना sir? What is, you know, these basic questions, existential questions are clear to me. I have my answers. तो मेरे जो भी सवाल थे मिल चुके हैं, है ना सर? अब बस जीने वाली बात है। तो as far as a mindset is concerned, तो जो मैंने सर स्पेशल फोर्सेस में सीखा, तो मेरे को ऑपरेशन कैसे प्लान होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें मुझे बहुत भली भांति अच्छी तरीके से मेरे अंदर, मतलब मेरे ज़हन में गड़ी हुई है ना सर? तो हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, दैट इज व्हाट कोर स्किल सर। तो वो है this so coming from the clarity of understanding of life itself, now when I can choose anything which I wish to do, है ना sir, with my time and my energy, whatever makes sense to me, I have clarity. With this clarity, where all your questions have vanished, you have a very simple, very clear outlook to life. So you are able to choose your target very, very specifically. Once you have chosen your target specifically, how to execute it, you have learned in the army, in the special forces, है ना, आपने यही तो सीखा है कि ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो लग जाता है। And the skill sets that we have, skill sets of how, the mindset of how to think, how to approach a problem, and how to be relentless, and how to overcome obstacles whenever you are faced with them, and how to actually how to be able to digest success and then move on next day. Yeah. In fact, this is very important thing you said. It's more than the failure, the success, digesting the success is very important, because the people don't know how to deal with the success. बिल्कुल सर। तो सो द माइंडसेट वो स्पेशल फोर्स में मिल गया था, क्लैरिटी मेरे को लाइफ में वैसे मिल गई सर, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस मेरे सारे सॉल्व हो गए सर, पता नहीं कैसे लड़क पड़क के मेरे को जिंदगी में, मतलब आई फील सो ब्लेस्ड कि जैसे भी मुझे समझ में आया, जैसे भी समझ में आया, अच्छा किया बुरा किया, जिंदगी में जो कुछ भी किया, है ना सर, तो पर समझ में तो आ गया, है ना सर, टू माय सेटिस्फैक्शन। आई डोंट हैव टू वेट फॉर टू बी रीबॉर्न नेक्स्ट लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ, है ना सर। I have, whatever, to my satisfaction, to the peace of my heart, I have understood what is the meaning of life, why are we there, what are we supposed to do, why are we doing it, इन सब चीज का मतलब क्या है ना सर, ये सब चीज मुझे समझ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब चीज का मेरे पास क्लियर कट clarity है सर। With this clarity, now I can look at the world and see what is meaningful to me, and when I choose that meaningful thing as my target, I already have the operational mindset which I learned in the special forces, in Indian Armed Forces, and I got the skill sets in terms of the team that is there. हमारी टीम में मैंने जैसे बताया सर, 15-15, 20-20 साल बंदों ने अंडर वाटर डाइविंग कर रखी है, 25,000 30,000 घंटे डाइविंग कर रखी है सर, है ना सर। तो ये है सर, है ना सर, पहाड़ों में पर सर 15-20 साल पहाड़ों में चढ़ चढ़ के घूम घूम के सर, मतलब लोग एक्सपीडिशन, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करते हैं सर, राइट, they go in for mountaineering expedition where you have to fight against nature, है ना सर, you have to be able to survive nature, है ना सर, you have to be able to survive nature to go able to climb a peak and come back। 2 हफ्ता, है ना, 4 दिन 5 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन जा सर, दैट्स इट सर। हम लोग महीने महीने घूमते हैं पहाड़ों में, बर्फ में, यहाँ वहाँ,
and we are not only fighting against nature, we are going there to find an enemy and I don't know, sort him out, है ना सर? तो इतना सारा स्किल सेट, इतनी सारी चीजें, इतना सारा माइंडसेट, इतना सारा सब कुछ इकट्ठा, मतलब एक टीम के तौर पे मेरे को मिला हुआ है सर. एंड ये मतलब दे आर लाइक फैमिली है सर, चल रहे हैं साथ में. बस. Vivek, as a part of your Operation Blue Freedom, हाँ जी सर. I know that you have already made your this disabled team, disabled people to climb Siachen Glacier, and Yes, sir. which is a world record. What Sir. next? What next in the offing? नेक्स्ट है सर, एयर वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है सर. कॉन्कर लैंड एयर वाटर है सर. तो एल हो गया, अभी ए पे लगे हुए हैं सर. So we are in good progress, sir. We are in fact at a very significant point. Let's see, we'll come to know in some time, very shortly. So air world record is being planned, sir. हाँ जी sir. So next thing on the cards, hopefully, मतलब time I don't want to put, but hopefully very soon we'll have some good news for everyone, where we'll have the air world record on the table, sir. हाँ जी sir. We look forward to that also. Sir. And Vivek, finally, for this young lot, I would like to ask you one very pertinent question. Please, sir. Our mind is like a, जैसे रथ होता है ना, और रथ के 7 घोड़े होते हैं. तो रथ को खींचने के लिए वो 7 घोड़े एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तो रथ आगे चलता है. यदि वो 7 घोड़ों में से एक भी घोड़ा यदि डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो रथ टूट जाएगा. Similarly, our thoughts are like a horses of chariot, which is the mind. If our thoughts are not aligned, then this chariot will reach nowhere. And one of the horse, which is the thought, is self-doubt, which is the notorious horse, which is the self-doubt. What would you suggest to this, our young lord, to get over this self-doubt so that their thought process is channelized and focused, and they get over those things what they are suffering? The majority of the people are suffering. Self-doubt, sir, is the basis of self-doubt is the habit to judge. जब आप दूसरों को नापोगे तो खुद को तो नापोगे ही. दूसरों को जब आदमी नापता है तो खुद के हिसाब से नापता है ना सर? तराजू में किसको रख, जब आप किसी और को नापते हो, when you judge someone else, you are basically putting yourself, comparing that person with you only. तो yes. आपको तो क्या होगा, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में जो आपको लगता है यार मैं इससे अच्छा हूं, है ना सर? पर आपको उससे कई ज्यादा ऐसे और लोग मिलेंगे जो आपसे 100,000 गुना ज्यादा अच्छे होंगे. नेचुरल, राइट? नेचुरल. तो जो आदमी दूसरों को जज करता है, दूसरों को बोलता है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेवकूफ है, ये बड़ा सही है, वो तो बड़ा हीरो है, ये तो बड़ा बेवकूफ है. जो आदमी अपने थॉट्स को इस टाइप के स्टाइल ऑफ थिंकिंग में रखता है, वो अपने आप को डाउट तो करेगा ही सर. तो दूसरों को जज करना छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जज करना छोड़ दोगे, तो आपके सेल्फ डाउट खत्म हो जाएंगे. नंबर 1 सर. ये सवाल जो होता है कि मैं कौन हूं, ये आपके मन में ही प्रश्न उठता है. इन योर माइंड ओनली दिस क्वेश्चन इज बॉर्न ऑफ हु एम आई. टिल द टाइम योर सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी is connected to your mind, till that time you will always be in the play of high and low, success and failure, belief and self doubt. इस seesaw में घूमते रहोगे आप, because the mind is a slave of its circumstances. है ना सर? Yes. तो जब तक आप सोचते हो कि I am the mind, then your mind is a slave of your DNA. It is a slave of what happened to you in your past, and what is happening to you right now, and what you think might happen to you in the future. So you are since you think you are the mind, you are now a complete slave of the vagaries of the mind, of the how should I say, very fragile nature of thoughts, है ना सर? तो
learn meditation. If you learn meditation, slowly, you will realize that you are not the mind. The mind is just a tool which has been given to you. If people who are listening, if they understand what is AI, है ना, सबको पता होगा आज की डेट में AI बोलते रहते हैं लोग. It is a very efficient or very high speed efficient way of carrying out large number of calculations, right? Artificial Now, intelligence. yes, sir. So there's artificial intelligence. Now what we are stepping into an age of quantum AI. So Yes. quantum AI aa raha hai. So basically your brain, your mind is a quantum AI machine. It can carry out infinite number of calculations in very, very small, in flashes of time. है ना, sir? And most of this is automated already. So basically, when your sense of identity is stuck with the mind, you become a slave of the mind, which is a slave of its circumstances. कोई आके आपको झापड़ मारेगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई आपको ये करेगा तो वो होगा, कल को गर्व, है ना? So you will always be a slave of what's going on rather than the creator of what's going on, है ना, sir? तो ये सब चलेगा. So what you have to understand is very simply that you are not the mind. You are that which has a mind. Yes. What Yes. is that mind? That mind is a tool. It is a quantum computer which has been given to you to calculate certain things. That's all. It is not, the mind is not supposed to dictate your life. You are supposed to dictate what the mind is supposed to do. Yes. Yes. How do you get there? Now it is very, very difficult for you to extract your sense of self out of your mind because your parents never taught you that you are not the mind. है ना, sir? आज की डेट में मैं शायद किसी माँ बाप से नहीं मिला हूं जिन्होंने अपने बच्चे को ये समझाया कि बेटे तुम अपना दिमाग नहीं हो, दिमाग तुम्हें मिला हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, तुम वो हो जो दिमाग को कंटेन करता है ना, सर? तो basically you should be sitting on the driving seat. You should drive your life. Exactly. Not the mind should drive you. Exactly. Your body is like, है ना, the body is like a car, है ना, sir? And क्या बोलते हैं, your mind is all the high tech machinery and gadgetry and all the instruments which are required to take the car anywhere. And you, the soul, the spirit, the realized thing that exists beyond time, space, energy, etc., that is always there, है ना, sir? That you are that. So you should learn how to use your mind rather than get used by it. How do you do that? Simple thing: learn meditation, practice it regularly, exercise, eat and sleep well and on time. Do this for some time, you will begin to see clearly. Once you have clarity, it will snowball into a full-fledged personality that you are. You will discover yourself and you will be free. Yes. And that will be Operation Blue Freedom. कहीं पहुंचे ना पहुंचे, आज रास्ता चलने में ही मजा आ रहा है, सर, है ना? No, life is a journey. Life is not a destination. Life is a continuous journey. Success is a journey. It's not that you achieve one goal and that end of it. No, it's a continuous process. Sure, sir. Vivek, बहुत मजा आया. I'm telling you, it has been for me the longest ever conversation. And I enjoyed, must be my viewers, and they will enjoy. Only because of one fact, there are many things we resonate with each other. Sir. Many things we think alike. Jesus. So it has gone such a long way. I can see that your side, it is already dark. In fact, on my side also it's getting dark. And really so grateful that you have given so much of time. It's so अरे सर, it is my absolute pleasure, sir. मेरे को आपने याद किया और ऐसा मौका दिया, सर, बातचीत करने. I am very grateful, sir, and so nice to speak to you, sir. है ना, sir? It's very wonderful, sir, to speak to you. बहुत अच्छा लगा, sir. मजा आ गया, in fact. And so from my side and from my viewer side, thank you so much having such a spiritual conversation. I will say it was not a podcast, it was a spiritual conversation. And not many things I learned, and so my viewers. And I can only just thank you for that. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.